2023 after it is passed by Lok Sabha, 2 hours. Consideration and passing of the Anusandhan National Research Foundation Bill 2023 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha, 3 hours. Consideration and passing of the Coastal Aquaculture Authority Amendment Bill 2023, 3 hours. Further, the committee recommended that the 3 hours time allotted for combined discussion on the statutory resolution seeking disapproval of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023 and consideration and passing of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha on 20th July 2023 may be increased to 6 hours. The Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. Shri A.D. Singh, Shri Almaram Karim, Shri Waiko, Shri A.A. Rahim, Shri Raghav Chadha, Shri Derek O'Brien, Dr. John Britas, Shri Binoy Viswam, Shri Tiruchi Shiva, Dr. V. Shivdasan, Dr. K. Keshav Rao, Shri Sushil Kumar Gupta to move the following resolution: that this House disapproves the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023, number 1 of 2023, promulgated by the President of India on 19th May 2023. Resolution has to be moved. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Resolution moved. Yes, sir. Shri Amit Shah to move a motion for consideration of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। Motion moved. There are 3 amendments by Shri Tiruchi Shiva, Dr. John Britas, and Shri Raghav Chadha for reference of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Members may move their amendments at this stage without any speech. Shri Tiruchi Shiva, are you moving your amendment? I move. Dr. John Britas, Sir, I move. Shri Raghav Chadha. Sir, I move. Sir, I move. The statutory resolution, motion for consideration of the bill, and the amendments moved thereto are now open for discussion. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Abhishek Manu Singhvi. Sorry. No. I'll follow the procedure. Please, bear with me. Please, no. Dr. Abhishek Singhvi. Sorry. Please check your sheet. Dr. Abhishek Singhvi. You are holding the floor. Go ahead. Honorable Chairman, sir. Honorable Chairman, sir. Honorable Chairman, sir. Members of this august House. Mic is on. Honorable Chairman, sir. Honorable members of this august House. As I rise to oppose this retrogressive bill, I ask why no government since 1992, when Delhi's special constitutional status was created, be it a BJP government or a Congress government, be it any other color of the political spectrum, be it the same political party at the center and the NCT, or be it different parties, not one of them has tried to overrule 2 constitution bench judgments
tried to overrule two constitution bench judgments on the status. Please. The status of NCT. Why did no government create an authority where the Chief Minister of Delhi is in a minority? Why did no government empower two bureaucrats to overrule an elected Chief Minister? Why did no government make the Honorable LG, who is a constitutional figurehead except in 3 areas, into a super CM? And finally, why did no government make it available to the LG's powers to appoint heads of regulatory agencies, large number, all of Delhi, for Delhi, by Delhi, funded and budgeted by the NCT government, but the power of appointment of its heads is with the LG. Honorable members of this august house, this government and this bill has done it all. Something not done earlier. Friends, why was it not done earlier? Because unfortunately it is the fitrat of this control freak sarkar, whose vendetta, whose visiting card appears to be vendetta, whose identity badge is of a graceless and fuming electoral loser. Yes. Whose approach is to control by hook or by crook, usually more by crook and less by hook. Yes. So friends, make no mistake about it. As I will demonstrate shortly, this bill is completely unconstitutional. It is fundamentally anti-democratic. It is a frontal assault on the regional voice and aspirations of the people of Delhi. It violates all principles of federalism, all norms of civil service accountability, all models of assembly-based democracy, and of course, it violates, as I will demonstrate, the basic structure. Friends, it is not about this NCT government or that. It is the deliberate regression from a people's government guaranteed to the people of Delhi 30 years ago. And hence it is a decimation of the most fundamental constitutional values on the basis of which 239AA and that entire chapter was passed. That is why, friends, we must all collectively rise to oppose it. Because otherwise, friends, Iqbal's words will haunt us when he talked of Tariq ki nazrein. And he said, "Lamon ne khata ki, sadiyon ne saza pai." Friends, we must also collectively oppose it, because someday this anti-federal knock will come at your door. ये उनके लिए सोचने की बात है जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं या समर्थन करने की घोषणा कर दी है, जो आज दिल्ली सरकार के साथ हैं। शायद कभी आपके पास भी जल्द ही आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। सबका नंबर आ सकता है। उस वक्त जब नंबर आएगा तो आपको सिर्फ याद आएंगे मार्टिन न्यूमेलर के वर्ड्स। वो पुराने जाने माने शब्द हैं, लेकिन मैं दोहरा रहा हूं। First they came for the socialists and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews and I did not speak out because I am not a Jew. Then they came for me and for you, and there was no one left to speak for us. Friends, what does, let me start with my two heads. What does this bill do textually first? And secondly, what is the consequence of that text? Let me deal with these two aspects first. दोस्तों, ये बिल एक सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाता है और उसको व्यापक शक्तियां देता है सुझाव देने की, हर नियुक्ति, हर स्थानांतरण, हर चीज के बारे में, ग्रेड ए अफसर से लेके दानिक्स अफसर तक। व्यापक है, विशाल है। कौन किसी और की सरकार में वित्त का सेक्रेटरी बनेगा, कौन पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी बनेगा, उनके बीच में अदला बदली कब और कैसे होगी, ये माननीय एलजी करेंगे निर्णय, न कि चुनावित सरकार।
ये बड़े स्पष्ट प्रावधान है, मैं अभी आपको प्रावधान के नंबर नहीं दे रहा हूं। दूसरा, जितने भी सतर्कता के अधिकार क्षेत्र हैं और जितने भी नॉन सतर्कता, नॉन विजिलेंस, वो सभी केसेस अनुशासनहीनता के विषय में सब इस अथॉरिटी में आएंगे सुझाव के लिए और माननीय एलजी के पास निर्णय के लिए। इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। उद्देश्य है एक भय और हिस्टेरिया का माहौल बनाना, एक खौफ पैदा करना, जिससे कि आप इन सभी सचिवों को कंट्रोल कर सके, जो कि दिख रहा है दिन प्रतिदिन। तीसरा, ये अथॉरिटी में 3 व्यक्ति हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा ओहदा दिया है, अध्यक्ष बनाया गया है। ये अजीब सा अध्यक्ष है दोस्तों। कोरम है 2 लोगों का, ये एक चेयरमैन है बिना चेयर के। मैंने वैश्विक और भौगोलिक रूप से आज तक कहीं नहीं देखा मेरे सीमित अनुभव में कि एक चुनावित चीफ एग्जीक्यूटिव 2 सचिवों के नीचे आएगा। ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे, ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा। और उसके बाद, और ये सब प्रावधान है, एक एक चीज में जो बोल रहा हूं प्रावधान है, उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। चौथा दोस्तों, बाद में चौथा, जितने बोर्ड्स हैं, समितियां हैं, संस्थाएं हैं, वो सब, और इसमें बहुत हैं, महत्वपूर्ण हैं, अल्पसंख्यक संघ, दिल्ली सूरेज बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, सो मेनी, लेबर वेलफेयर बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ऐसे 20 की सूची हमने दी है न्यायालय में। उन सब की बजट बनाएगा ये एनसीटी सरकार। उनके काम होंगे एनसीटी के लिए, एनसीटी के लोगों के लिए, लेकिन उनके अध्यक्ष, उनके हेड को वहीं से अपॉइंट होंगे, सुपर सीएम या गृह मंत्रालय से। 5वां, जो दूरगामी नीतियां हैं सभी सिविल सर्विस के लिए, उनके टेन्योर के लिए, उनके स्थानांतरण के लिए, उनकी नियुक्तियों के लिए, कौन सी पोस्ट नाजुक है, कौन सी पोस्ट सेंसिटिव नहीं है, और उपयुक्तता, वर्ड इस्तेमाल किया सूटेबिलिटी, उपयुक्तता इस अफसर की इस पद के लिए, ये सब, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होना चाहिए, ये सब माननीय सुपर सीएम, और अंततोगत्वा हम जानते हैं कि जो सब चीज करती है नियंत्रण, वो होम मंत्रालय। हर छोटी चीज के लिए, एक हर बड़ी चीज के लिए पूर्ण रूपेण व्यापक निर्बाध टेक ओवर, कब्जा, निर्बाध कब्जा है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, आप जैसे उच्चतम पद पर विराजमान महानुभाव, क्या आप अफसर क्लासेस के लिए निचले से लेके सेक्रेटरी तक नीतियां आप बनाना चाहते हैं? कम से कम वो तो एक छोटे ओहदे वाले मुख्यमंत्री के पास छोड़ दीजिए। Sixthly, friends, the secretary, this is amazing. The annals of history of legislation have not seen bills like this. The secretary of the department is made in charge of preparing and authenticating every memo, including cabinet notes. Not bad yet. Disagreements between the secretary and the minister have to be recorded in writing and then sent to the LG, and the secretary in the act itself, in the bill itself, says that the secretary may write on the note which he sends to the LG why the secretary thinks that the council of ministers is taking a decision contrary to law. Any law. Law means any law. Any law of India, in the opinion of the secretary, is being violated by the council of ministers, goes to the LG. It makes, friends, the elected government hollow. A chief minister paralyzed, unable to act. Any minister shivering before his or her secretary. And the bureaucracy looking up to the LG even for sneezing. And the LG, of course, looking up to the home ministry. ऐसे हालात को देखकर मुझे वो पुराना शेर याद आया दोस्तों, एक काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर।
This bill, friends, eliminates 2 out of the 3 interlocking, fundamental, distinct chains and institutions which form the bedrock of any assembly-based democracy, and therefore they hit at the very root of the basic structure. These 3 interlocking chains, which are discussed in 10 paragraphs of the Supreme Court judgment, I wish somebody had read the judgment carefully before drafting the bill, are 1, a political executive through the Council of Ministers answerable to the people; 2, a civil service answerable to the political executive and hence accountable to the people through the political executive; and regulatory agencies which are an integral part of governance in any system. The bill simply eliminates number 2 and 3. Out of 3, it takes away 2. Friends, the object is not to make Hamlet the Prince of Denmark, not even the slave of Denmark, but to take over Denmark itself. It is to make Denmark a hollow shell. Substitute NCT for Denmark. Its second impact is that it eliminates the accountability of the civil service completely. In doing so, it eliminates the very concept of Westminster-style democracy, which Delhi is supposed to be fully Westminster-style minus 3 subjects only. The civil service, friends, after this bill will jump, bend, crawl, answer at the behest of an external agency, be it the Home Ministry or the Super Chief Minister. There is not even a token diarchy of powers between the CM and the LG. It converts an impartial civil service into a dictatorial civil service. Shame. It gives a real example of that forgotten serial which I love to watch and all of you have watched. Yes, Minister. The civil servant is saying only no, Minister. Remember what Nehru said about the ICS. That time, Indian Civil Service says this is neither Indian nor civil, nor does it provide service. I'm not sure how accurately it will apply in 2023, but I think he came very close to it. एक म्यान में 2 तलवार नहीं है ये केस. म्यान भी एलजी के पास है और तलवार भी केंद्र सरकार के पास है. मुख्यमंत्री एक कोने में खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं सिर्फ. My third head of submission to this august house, friends. This bill seeks to amend the constitution by an act of parliament. The constitution and the debates underlying it all wanted Delhi to have all powers minus 3. This bill adds a 4th to those 3, and it does it magically without a constitutional amendment. It is indeed magic, even if it is black magic, because you can amend a constitution without a constitutional amendment. Absolutely black. 4th, decimating 2 out of the 3 prongs of a Westminster-style democracy, which has an answerable and accountable civil service and a regulatory agency, clearly violates the basic structure, because the basic structure of an assembly-based democracy includes these 3 interlocking chains. I believe that that would be a very likely Supreme Court conclusion if at all this bill is passed. Fifthly, it also violates the basic structure in another manner. The principle of decentralized federal government that has already been a part of the basic structure from the days of Mumbai in 1993. Around the time, by the way, when 239AA was created. If there is one animating bedrock philosophy underlying 239AA, it is decentralized federal governance. Otherwise, why not keep Delhi as a mere large municipality under central government's control? Advani ji हुआ करते थे बहुत बड़े अधिकारी ऐसे municipal setup में पहले. Why not a mere union territory? You know there are 10 of them. Delhi is the only one to have been given the constitutional status by a constitutional amendment. No other union territory. Why? Para 77 of the 2023 judgment partly answers that. I quote, "In the spiral of cooperative federalism, the Union of India must exercise its powers within the boundaries created by the Constitution. NCT Delhi, in having a sui generis federal model, must be allowed to function in the domain chartered for it by the Constitution. The Union and the NCT share a unique federal relationship.
it does not mean that NCT is subsumed in the union merely because it is not a state. ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं. Friends, Delhi alone, out of 10 such territories, was given this constitutional status. Not only because federalism and the aspirations of the people of Delhi were recognized, but the idea was that you will not be able to amend it out of shape, out of character, without a constitutional amendment. You don't have it today. You have a statute. This arrogant government, and this is very interesting, this arrogant government first tried it by invading Delhi's special status in 2016 and 17. Forgotten now, by executive action without even a statute. We argued and we got a 2018 first Constitution Bench judgment which struck it down. It did it again by a second notification without a constitutional amendment and lost it, and the judgment came in 2023, few months ago. But friends, unfortunately there is no cap on deliberate foolishness. There is no bar to repetitive constitutional error. They have done this again. This time they have upgraded it from a notification to a statute, but still without a constitutional amendment. And even if this bill is passed, which I am sure it will not be, the result will be the same a third time. History will repeat itself. Friends, constitutional stupidity masquerading as power is by no means a new phenomenon, especially when reason falls on deaf ears. The result is always the same: जिहालत, हिमाकत और नफरत. संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर दोस्तों लम्हों की बात नहीं है, सदियों की बात है. और अगर संविधान को सदियां सुनेगी, लम्हे नहीं, तो हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि हम उस संविधान की आवाज की हिफाजत करें. क्योंकि अदर नहीं तो संविधान चीख चीख कर कहेगा मुझे लम्हे नहीं सदियां सुनेंगी, हिफाजत से मेरी आवाज रखना. आज आप केंद्र में हैं, मैं आप पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं. आज आप ट्रेजरी बेंच में हैं, कल कोई और होगा. ये कायम रहेंगे कि अच्छा किया आपने हस्तक्षेप किया, क्योंकि आपके कायम शब्द के लिए मेरे पास एक जवाब है. तुमसे पहले भी वो जो शख्स यहाँ तख्त नशीं था, तुमसे पहले भी जो यहाँ शख्स तख्त नशीं था, उसको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था. बल्कि बशीर भद्र को कृपया भूलिए नहीं. आप लोग सब जानते हैं उसको, मुझे भी कोट करते रहते हैं आप में से कई. बशीर भद्र को उसने ही कहा था, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है. शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है. जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है. तो इसलिए कायम शब्द का इतना अहंकार नहीं होना चाहिए. Sixthly, friends, let me read some seminal words in the 2023 judgment. Now, these are going to take a little bit of time. It's a longish quotation, but it's very important for this house. 10 paras, and I'm only reading selectively, of the Supreme Court. It's completely forgotten. I'll read a little quickly and fast. This is a unanimous judgment, not a single dissent. And these words have been ignored, and they are not my words. Even though it's long, pardon me, allow me to read it. It's the highest court of the country. In a democracy, each word I'm reading is a quotation, and I can assure you these words will come to haunt you. In a democracy, accountability lies with the people who are the ultimate sovereign. The cabinet, consisting of elected representatives, is collectively responsible for the proper administration of the country and is answerable to the legislature for its actions. The government is responsible for the decisions and policies of each of the ministers and of their departments. This creates a multi-linked chain of accountability where the legislature is accountable to the people who elected them and the government is collectively responsible to the legislature. It's quite amazing. Collective responsibility is an important component of parliamentary democracies. The day-to-day decisions of the Council of Ministers are to be implemented by a neutral civil service under the administrative control of the ministers in order to ensure that the functioning of the government reflects the preferences of the elected ministers and through them the will of the people. It is essential to scrutinize the link of accountability between the civil service professionals and the elected ministers who oversee them.
Under the Westminster parliamentary democracy, civil service constitutes an important component of a triple chain of command that ensures democratic accountability. हर शब्द की धज्जियां उड़ा रहा है ये बिल, हर शब्द की. The triple chain of command is as follows. Civil service officers are accountable to the ministers, ministers are accountable to parliament, and thirdly, parliament legislature is accountable to the electorate. An unaccountable and non-responsive civil service may pose a serious problem for governance in a democracy. It creates a possibility that the permanent executive, consisting of unelected civil service officers who play a decisive role in the implementation of government policy, may act in ways that disregard the will of the electorate. In a federal polity, a fundamental question which arises is which would be the more appropriate authority to whom the civil service officers would be accountable. Everything which the bill is saying is dealt with here. In a democratic form of government, only one more para is left, friends, the real power of administration must reside in the elected arm of the government, subject to the confines of the Constitution. A constitutionally entrenched and democratically elected government needs to have control over its administration. If a democratically elected government is not provided with the power to control the officers posted within its domain, then the principle underlying the triple chain of command of collective responsibility would become redundant. That is to say, if the government is not able to control and hold to account the officers posted in its service, then its responsibility towards the legislature as well as the public is diluted. The principle of collective responsibility extends to the responsibility of officers, who in turn report to the ministers. If the officers stop reporting to the ministers or do not abide by their directions, the entire principle of collective responsibility is affected. Therefore, GNCT ought to have control over the services. Now, I know there's a statute. I'll deal with their best defense, which has been raised by the government. But first, I've read to you 10 paragraphs. For those interested, from 102 to 111. Clearly, friends, this bill is therefore, in the light of these paragraphs, stillborn. It does not, indeed cannot remove the basis, which is this of the unanimous Constitution Bench judgment. These quotations I have just read are bedrock principles. This bill is simply providing provisions directly contradicting these bedrock principles. It cannot simply nullify a unanimous Constitution Bench. It must at least amount to removing its basis and rendering that judgment inoperable. I have just read to you passages which are impossible to remove the basis of. These are bedrock principles. How do you remove the basis? It is therefore trying to overrule directly a Supreme Court judgment. It therefore is an impermissible constitutional exercise if you try to nullify a Supreme Court judgment without removing its basis. It is not only does this bill insult the people of Delhi, it insults the Supreme Court. It insults our intelligence. कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि जैसे 1935 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में चुनाव जरूर रखे थे, लेकिन पावर नहीं रखा था कुछ भी. क्या यही कॉलोनियल मॉडल का आप कार्यान्वित कर रहे हैं आज इस बिल द्वारा? हम आपको चुनाव दे रहे हैं, पद दे रहे हैं, लेकिन पावर नहीं दे रहे हैं. Is this not an illegal power grab through the back door? Yes. Now, seventhly, friends, I come to the main defense, the only defense of the government, because you should know this, how wrong and how fallacious it is. It is based on clause 7A and B of the article. Can I just read? None of you need to be lawyers to understand this, the text of the, and you'll get the answer automatically. This is the entire defense. Parliament may by law make provision for giving effect to or supplementing, mark the word, for giving effect to or supplementing the provisions contained in the foregoing clauses, and for all matters incidental or consequential thereto. Friends, these words on bare text mean that to reinforce, operationalize, effectuate and implement the earlier provisions which provide the entire architecture for Delhi, Parliament can make laws. This was a provision put so that every time something is to be made to fill a gap, to plug a hole, you don't have to have a constitutional amendment. Parliament is sufficient to plug that hole, to reinforce the Delhi's architecture. Friends, the short point is, can you destroy or decimate that architecture and structure by resorting to a provision that says that the power is exercisable to reinforce it or implement it? ये इस प्रावधान के साथ विश्वासघात नहीं है क्या?
7A and 7B were created when implementing the true letter of, you could reinforce or plug the gaps without amending the constitution. It can never be used to destroy, to supersede, to bury that architecture itself. If this ridiculous interpretation is accepted, does it mean that by this brute parliamentary majority, today you have transferred services to the central government, tomorrow you will do this for each item, electricity, parks, highways, Waqf board, labor board? Then why not have Delhi as a municipality? Why create the constitutional architecture? And that too by using clause 7, which says supplement, reinforce, implement, incidental. At the end of para 46 of the 23 judgment, which nobody appears to have read as far as the bill makers are concerned, it says again, if we interpret the phrase insofar as such matter is applicable in a manner, insofar as such matter is applicable to union territories, in a manner to exclude a greater number of entries than what is already excluded, that is in addition to 3, it will defeat the very purpose of granting a special status to NCT. This is the Supreme Court in para 46. In other words, friend, this government, like Alice in Wonderland, says words will mean what I say they will mean. That's their interpretation of 7. I will use 7 as a Brahmastra, not to supplement and implement 239AA, but to supplant it, to reduce it to vanishing point. The scalpel created to heal, to cauterize, to cure, to fill gaps, to make you more healthy, will now be used to stab and kill. Obviously, only Alice in Wonderland in this government is on the same page on this. दोस्तों, ये सब प्रावधान जैसे क्लॉज 7 है और इस तरह प्रकार के प्रावधान कई जगह होते हैं, आम चीज़ है, लोगों की आवाज़ को ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए है, विकास और समृद्धि की गति और दिशा को प्रोत्साहित करने के लिए है, न कि वोट डालने वाली जनता को निहत्था बनाने के लिए, उसको बेबस करने के लिए। इस बिल ने ऐसे सभी उद्देश्यों को अपने माथे पे उल्टा करके रख दिया है। संविधान को इस प्रकार से विकृत करेंगे आप तो परवीन शाकर के शब्द पूरी तरह से लागू होंगे। ए मेरी गुलजमी तुझे चाह थी एक किताब की। अब संविधान वाली किताब की बात कर रहे हैं। ए मेरी गुलजमी तुझे चाह थी किताब की, अहले किताब का मगर क्या तूने हाल कर दिया। Those in the treasury benches adopting this are actually distorting it out of recognition. The fundamental error of the central government and of the Honorable Home Ministry is to confuse the existence of power with the validity of its exercise. For the last several days, we have been hearing curtain raisers coming from the Home Ministry that we have the power. We are not talking about competence. The question is, if you have the power, its existence is subject to substantive limits. What you do not have is the power to cross the Lakshman Rekha, which this bill is designed to cross. The question of competence to pass a law, which I am not at all addressing here, is quite different from whether the law is a valid exercise of such competence. Not when it violates the basic structure, not when it violates substantive provisions. Friends, the bill is designed to violate specifically all those substantive limits. This is beyond the remit of any statutory bill. Whether even a constitutional amendment can do it, we will see when they bring a constitutional amendment in a 4th round. But the statute being lower than the constitution must go. The constitution is itself challengeable if it violates the basic structure. That stage has not come. Turning now to my 8th head, and I'm finishing very quickly, just give me a few minutes more. It is convenient to forget, and this you'll be interested to know, now that we are having a bill, we tend to forget this. There were no exigent circumstances on 19th of May when you passed the ordinance. The Supreme Court has said in 100 judgments, you must demonstrate how, quote unquote, it is necessary to take immediate action. Immediate necessity is distinguished from mere desirability. These are not my words, they are Supreme Court words. Expression necessity coupled with immediate action conveys the sense that it is imperative due to an emergent situation to promulgate an ordinance. Now I want to tell you, on 11 मई 2 महीने की जिरे और बहस के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने निर्णय दिया। 6 दिन बाद 17 मई को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया ऑर्डिनेंस।
लेकिन पारित नहीं किया, घोषित नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे 2 दिन बचे हैं अभी उच्चतम न्यायालय के बैठने के लिए। 19 तारीख को उच्चतम न्यायालय अवकाश में जारी थी। The revised time given to you by the LOP was 1 second. Some of my friends here have to donate some time. 30 minutes. You have left only 13 minutes for Mr. Chidambaram. 2 minutes more. 2 minutes more. So you will leave 11 minutes for him. Yes, yes. Then there are other people to donate time to us. There are other people. On 19th May. 1 second, 1 second. इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन रहने के ये जरूरी है कि बहस अच्छी हो रही है। बहुत दिन के बाद बहस अच्छी हो रही है, सभी लोगों को सुनने में आ रहा है और नॉलेजेबल है, तो आप कंसीडर करिए, आपके हाथ में है, और एक 10 मिनट एक्सटेंड कर दीजिए। Every minute used by you, doctor, will cut into the time of Mr. Chidambaram. No. Initially, both were given equal time. Then his time was increased. माननीय अध्यक्ष, Go ahead. माननीय अध्यक्ष महोदय, Last 1 minute. 17 तारीख को ये अप्रूव हो गया कैबिनेट द्वारा। इसको आप 19 की शाम को 5 बजे के बाद जब मैं घर जा रहा था कोर्ट से क्यों लाए? क्योंकि आपको मालूम है कि 19 तारीख लास्ट डे था कोर्ट के फंक्शनिंग का, उसके बाद अवकाश थी। क्या यू वेट फॉर 2 days fearful that the Supreme Court is sitting till 19th May? Is this not cheap tactics and chicanery at its worst? The deleterious effects of this ordinance were visible in the last 2 or 3 months it's been there. Governance is at a standstill. 2 bureaucrats are threatening to take majority decisions over the Chief Minister's head. The LG daily trespasses in all domains of elected reps. Heads of bodies funded and operated by NCT are approved and controlled by the Home Ministry. NCT is reduced to a fiefdom of the central government. Insubordination is at its peak. हमारी बात आप सुनते, मैं बस अंत कर रहा हूँ 1 मिनट में। हमारी बात तो आप सुनेंगे नहीं, सुनते नहीं हैं। कम से कम अपने मार्गदर्शक मंडल की बात तो सुन लिया करिए, या कभी कभी उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, उनको भी भूल गए आप लोग। मार्गदर्शक मंडल से बात कर लीजिए, क्योंकि आपकी सरकार, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आपके मार्गदर्शक गृह मंत्री अडवाणी जी दिल्ली को पूरा स्टेटहुड जाने का बिल लाए थे। और जब आप 2 चुनाव दिल्ली के जीते इस मुद्दे पे कि दिल्ली के पास पूरा स्टेटहुड होना चाहिए, तो मदन लाल खुराना जी, आपके पूर्व मुख्यमंत्री, ने कहा था, कोट, फुल स्टेटहुड फॉर दिल्ली इज द रेमेडी फॉर ऑल इट्स इल्स। आज देश और दिल्ली आपसे फुल स्टेटहुड नहीं मांग रहा है। आज सिर्फ वो इतना विनती कर रहा है कि जितना बाएं हाथ दाएं हाथ ने संविधान ने दिया है, उतना बाएं हाथ से तो नहीं लीजिए। इतनी छोटी सी विनती कर रहा है। जहां तक दुख और आक्रोश का सवाल है, ये एक दुखद और खतरनाक प्रस्तावित कानून है दोस्तों। अंत करूंगा मैं ये कहकर कि ये दिल्ली के बारे में शेर बिल्कुल उपयुक्त बैठाता है ये बिल, ये प्रस्तावित कानून। चेहरे पे सारे शहर के गर्द मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है, दुख और आक्रोश का हाल है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, 20 मिनट्स। माननीय सभापति महोदय, आज जब इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक के ऊपर मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो पहले मैंने विपक्ष के विद्वान वक्ता महोदय का वक्तव्य सुना तो मुझे विचित्रता का अनुभव हुआ और संपूर्ण विपक्ष को देखकर विस्मय हो रहा है। विचित्रता इसलिए कि उन्होंने कहा कि आई हैव नॉट सीन एनी पैरेलल एनीवेयर। तो मैं भी कहना चाहता हूं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी देश की राष्ट्रीय राजधानी में उस देश की केंद्र सरकार की शक्तियां, उससे अधिक शक्तियां किसी और की होनी चाहिए। मेरे विचार से दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। सो आई सपोर्ट व्हाट अभिषेक मनु सिंघवी जी हैज सेड, आई एम अनेबल टू फाइंड पैरेलल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दूसरा विषय जो मैंने कहा कि विस्मय का अनुभव क्यों हो रहा है, अभी देखिए उन्होंने 2 बार सुपर सीएम प्रयोग किया कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, मगर महोदय इस देश ने बगैर संवैधानिक पद पर बैठे हुए सुपर पीएम 10 साल तक देखा है। और मैं ये कह
रहा हूं कि अभी मैंने कितना सुंदर सामंजस्य देखा कि उन्होंने कहा कि समय कम हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी वालों ने कहा हम भी समय देने को तैयार हैं। सारे विपक्ष को देख के विस्मय होता है कि कांग्रेस पार्टी, जिसका कि 3 राज्यों में स्थिति यह रही कि गुजरात में वोट हाफ कर दिया, बिल्कुल बता रहे हैं, सुनिए तो, अरे सुनिए तो, बता रहे हैं। सॉरी गुजरात मेंबर्स का वोट one second. Dr. Abhishek Singhvi was heard in rapt attention. This is the decorum of the house. No, no. Yes, I am coming to that, sir. Let me Do not get into disruptive mode. Dr. तो मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग किस तरीके से आए हैं साथ में। अरे साहब, बहुत सारे शेर बोले थे, ऑर्डिनेंस के पार्ट नहीं थे, हम भी बता रहे हैं आपको। I will have to name you. देखिए इनकी I will have to name you. ठीक, You have got it as a habit. क्या शिद्दत दिख रही है rise and make a एक दूसरे को सपोर्ट करने में। देखिए इनकी स्थिति ये गुजरात We want decorous debate here. Doctor said many things. Maybe digestible, maybe indigestible. Dr. Sudhanshu Trivedi. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया और आपने इनको माफ कर दिया। और उसके माफी के बाद भी मुझे लगता है, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, आप साथ में आए हैं दिल्ली के इस बिल पे, दिल्ली की जनता के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, ये दिल्ली की समझदार जनता समझती है। तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। अब यह एक संवैधानिक विषय है, संवैधानिक विषय है कि यह जिस प्रकार से संविधान में लागू होना चाहिए, परंतु उसके साथ राजनीतिक टीका टिप्पणी की जा रही है, तो एक सैद्धांतिक विषय भी आता है। तो मैं संवैधानिक और सैद्धांतिक दोनों विषयों का जवाब दूंगा। आई विल रिप्लाई बोथ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में बहुत स्पष्ट किया था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, ये एक विशेष श्रेणी का यूनियन टेरिटरी है, यानी विशेष श्रेणी का संघ शासित राज्य है। वैसे मुझे लगता है संघ शब्द आते ही बेचैनी ज्यादा हो सकती है दूसरी तरफ, और संघ शासित से बेचैनी और हो सकती है, इसलिए मैं यूनियन टेरिटरी वर्ड प्रयोग करूंगा। इट इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरी। और वैसे भी आजकल अंग्रेजी के प्रति मोह बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपने गठबंधनों का भी नाम अंग्रेजी में ही ज्यादा रखा जा रहा है। संविधान में जो भाग 8 में उल्लिखित, वैसे तो जब मैंने टीवी चर्चा के दौरान कई बार विपक्ष के लोगों से INDIA का हिंदी फुल फॉर्म पूछा, तो पहले दिन तो लोग गूगल देख के भी नहीं बता पाए। खैर, अब मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के भाग 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, अरे सुनिए बात, देखिए संविधान के भाग 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद 239 से 242 तक संविधान में इस विषय का पूर्ण वर्णन है। अनुच्छेद 239AA में इसका विशेष प्रावधान किया गया है। यदि उसके क्लॉज को 239AA3B को देखें तो संसद को दिल्ली संघ राज्य यूनियन टेरिटरी से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के जिस निर्णय का बार बार उल्लेख किया जाता है और हमारे विरोधी उसको अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं, उसमें भी बहुत साफ देख लें कि 105 पेज के उस निर्णय में कहीं पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के द्वारा दिल्ली के बारे में कानून बनाए जाने के विषय के ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके बाद भी न्यायालय के आदेश में पैरा 161 और 162 को कई बार उल्लेख किया जाता है, परंतु यदि पूरे संदर्भ में देखें तो पैरा 86, 95 और पैरा 164F को पढ़ें तो वहां पर संसद के द्वारा दिल्ली के संदर्भ में किसी भी विषय के ऊपर कानून बनाने की शक्तियों का विधिवत अनुमोदन है, कहीं पर निगेशन नहीं है। और स्पष्टता के साथ इसकी आवश्यकता क्यों थी? ताकि शासकीय आदेश को एक विधायी शक्ति भी मिल सके, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को एक लेजिस्लेटिव पावर भी मिल सके। इसलिए उस अस्पष्टता को दूर करने के लिए, टू रिमूव एनी एन आयोटा ऑफ सस्पिशन, यह आवश्यक था। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। अब कई बार लोग कहते हैं साहब अध्यादेश की आवश्यकता क्यों थी?
वैसे तो माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस विषय को लोकसभा में बताया था। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि 19 तारीख को अध्यादेश क्यों आया, शायद उन्हें ध्यान हो कि दिल्ली सरकार में जैसे ही चंद दिनों में ताकत मिली तो सबसे पहले किन फाइलों के बारे में, सतर्कता के साथ सतर्कता विभाग की फाइलों के बारे में कार्रवाई की गई। मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार सतर्कता सचिव ने यह रिपोर्ट किया कि रात 9 बजे मंत्री के द्वारा उनको कॉल किया गया, सुबह 3 बजे तक वह कार्रवाई चलती रही, 76 से अधिक फाइलें मंगाई गईं और उन्होंने उपराज्यपाल महोदय को यह आशंका भी व्यक्त की कि उसमें कई ऐसी फाइलें थीं जो कि गोपनीय थीं और उसके अनुसार उन फाइलों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ भी संभव है। अब मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि दिल्ली में बाढ़ आई तो दिल्ली फ्लड कंट्रोल अथॉरिटी की बैठक तो 2 साल से नहीं हुई, मगर विजिलेंस की फाइलें ओवरनाइट सर्च की गई। तो मेरे विचार से, और ये सर 16 और 17 मई की रात का था, तो मानी हुई बात है जब ऐसी परिस्थिति नजर आएगी तो उसके 1-2 दिन के अंदर अध्यादेश की आवश्यकता महसूस होगी। यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी पे नियंत्रण की बात आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा की जाती है, तो ये लोग तो अपनी एक पैरेलल ब्यूरोक्रेसी भी बना चुके हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के समाचार पत्रों में आया है कि कई ऐसे लोग जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सरकारी पदों पर भी विद्यमान हैं और सरकारी पदों पर रहते हुए सरकारी शक्तियों का भी उपयोग कर रहे हैं। वैसे ये लोग बहुत दावा करते हैं कि इन्होंने बहुत सारी चीजें फ्री दिया, कुछ 100 रुपए दिल्ली की जनता को कुछ मामलों में फ्री मिला और अपने लोगों को कई मौकों पे, कई जगहों पे, दर्जनों से ऐसे लोग हैं जिनको लाख लाख 1.5 लाख की तनख्वाहें मिली। और यदि आरोपों को देखा जाए तो करोड़ों रुपए के घोटालों के आरोप हैं। एक कहावत होती है, माले मुफ्त दिले बेरहम। तो मैं कहना चाहूंगा इनकी तो स्थिति यह है कि माले मुफ्त दिले बेरहम, दिल्ली पे सितम और करोड़ों हजम। अब एक और बात जो ब्यूरोक्रेसी के नियंत्रण की बात है, तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस दिल्ली प्रदेश में एकमात्र ऐसा प्रकरण हुआ जो पूरे देश के इतिहास में बहुत विचित्र था कि दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के अंदर अपने साथ मैन हैंडलिंग का आरोप लगाया। मेरे विचार से पूरे भारत के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा कि इस प्रकार की बात, इस प्रकार का आरोप लगा हो और वह भी मुख्यमंत्री की उपस्थिति में लगा हो। यह दर्शाता है कि ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रण करने की जो छटपटाहट है उसमें वास्तविकता में वो फितरत क्या है। और मैं एक टेक्निकल पॉइंट कहना चाहता हूं, दिल्ली का कोई स्टेट कैडर नहीं है। जैसे राज्यों का कैडर होता है तो राज्य का मुख्यमंत्री उस कैडर को नियंत्रित करता है। जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी होते हैं वो यूनियन टेरिटरी कैडर में आते हैं। जब वो सारे राज्यों में, सारी केंद्र शासित राज्यों में उनका स्थानांतरण हो सकता है, तो मैं आपके माध्यम से विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि यदि दिल्ली के एक अधिकारी का ट्रांसफर गोवा होना है और दिल्ली के सीएम की उस पर एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी तो यह कैसे संभव हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस विषय के ऊपर केंद्र सरकार की शक्तियां परिभाषित हो। अब एक दूसरी बात भी है, दिल्ली में स्टेट कैडर भी नहीं है, यानी जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और राज्य के कैडर होते हैं, तो यहां भी दानिश कैडर है। यानी दानिश कैडर में भी 3-4 यूनियन टेरिटरी आती हैं, दमन दीव और अन्य। अब दानिश कैडर के एक अधिकारी की जरूरत यदि अंडमान में या दमन दीव में भी होगी और दिल्ली का मुख्यमंत्री यह तय करेगा, तो क्या यह संवैधानिक दृष्टि से उचित है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो यह विषय रखा है वो पूरी तरीके से उचित है। अब दुरुपयोग की बात में मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इनकी वास्तविक मंशा क्या थी। दिल्ली में एक जनरल फाइनेंशियल रूल 2019 है जो ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए से अधिक का अगर किसी भी प्रकार का व्यय होगा तो वह मंत्री की शक्ति से बाहर होगा और वह एलजी के पास जाएगा। महोदय, इनके मुख्यमंत्री जी का जो मकान या वजीर आला का अजीमुशान महल बनाने के लिए जो बिल बने साहब, वो पूरे उसके एक साथ नहीं बने। 10 करोड़ से कम के 8.5, 8, 7.5, 9 करोड़ रुपए के डिफरेंट बिल बने। और एक मद ऐसा है जिसमें कि मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारियों के लिए, महोदय जानते कितने का बिल बना? 9.99 करोड़। यानी 0.01 से कैसे बचा जा सकता है कि टेंडर न करना पड़े, मन मुताबिक खर्चे कर लिए जाएं। यह दर्शाता है कि नियमों के प्रति और ब्यूरोक्रेटिक नियमों के प्रति इनके मन में क्या आस्था है। और इतना ही नहीं, दिल्ली मेट्रो के लिए तो वृक्ष काटने की परमिशन वर्षों तक नहीं मिलती थी, मगर मुख्यमंत्री आवास
इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक नैतिकता सैद्धांतिकता का सवाल उठाया जाता है, तो मैं कोट करना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, जिनका वो आलीशान शीश महल बना हुआ है, उन्होंने 27 अक्टूबर 2013 को शीला दीक्षित जी के विषय में लिखा था ट्वीट, और उनको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हैं, मैंने तो सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं, कौन भरता है इस एसी का बिल? और आगे वो कहते हैं, मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तो कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान घर में कैसे रह सकता है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए केजरीवाल जी का कलेजा कापा हो या ना कापा हो, रूह कापी हो ना कापी हो, रूह है क्या है, किसकी रूह है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि शीला दीक्षित जी जहां भी होंगे उनकी रूह को बहुत तकलीफ हो रही होगी कि जब उनके ऊपर ऐसी बातें करने वालों के साथ वो सारे लोग आज आकर खड़े हुए होंगे। वैसे महोदय, उनके घर में 10 एसी थे, यहां तो 15 टॉयलेट भी हैं, और इतना ही नहीं, 1-1 करोड़ रुपए के पर्दे भी लगे हुए हैं, और 1 करोड़ रुपए के पर्दे का एस्टीमेट है। और इतना ही नहीं, अब सुनिए, उनके सामने एक दूसरी समस्या हो गई है कि अभी तक जो बातें चल रही थी, अब उनके सामने यह समस्या है कि उन चीजों को कैसे छुपाएं। देखिए, मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि अब उनकी फितरत जग जाहिर हो चुकी है। तो आज आम आदमी पार्टी की स्थिति यह है कि अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। अब इस घर को सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। और यहां पर इसके बाद मैं कटाक्ष के बाद एक बात करुणा के साथ कहना चाहता हूं कि अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली हुई वो पार्टी जो एक कमरे के मकान में रहते थे, और उससे निकली हुई पार्टियां सैकड़ों करोड़ के आलीशान मकान में रहती हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता और जिन जिन लोगों ने उस आंदोलन का समर्थन किया उनके ऊपर भी एक आघात है, और साथ ही साथ ये एक बात का और भी संकेत देता है, फूड फॉर थॉट है देश के लोगों के लिए, कि एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स कई बार बड़े विचित्र परिणाम भी देती है। अब किसी नए नवेले प्रयोग को आजमाने का वक्त नहीं है, बल्कि आजमाए हुए मोदी जी के नेतृत्व को चमकाने का वक्त है। और बहुत से लोग ये कहते हैं, संवैधानिक नैतिकता का प्रश्न उठाते हैं कि अध्यादेश क्यों लाया गया। अध्यादेश के लाने का तात्कालिक कारण मैंने बता दिया, और वैसे मैं अपने विपक्ष के लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं कि इन लोगों ने कितनी बार अध्यादेश लाए हैं। नेहरू जी की सरकार में 70 बार, इंदिरा जी के जमाने में 77 बार, राजीव जी के समय में 35 बार, नरसिम्हा राव जी के समय में 77 बार, मनमोहन सिंह जी के समय में 61 बार, और जो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनी थी भाजपा विरोध में, उसमें 1.5 साल में 77 बार। तो मुझे लगता है अध्यादेश का विषय उठाने से पहले इस अंक गणित को भी देख लेना चाहिए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो संविधान की दुहाई देते हैं उनके लिए, ये तो वो लोग हैं सभापति महोदय जिनकी संविधान में क्या आस्था है। इन्होंने संसद के द्वारा पारित सीए कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया। यह संविधान का सम्मान है, और वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था। नागरिकता का विषय तो पूर्ण राज्य का भी विषय नहीं हो सकता, और तो उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने पारित कर दिया। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जिस प्रकार के कार्य करते हैं उनका संविधान में कोई आस्था नहीं है। और अभिषेक मनु सिंघवी जी अभी कह रहे थे इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, आफ्टर द 72nd एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देयर आर 3 tier ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एक म्युनिसिपल और जिला पंचायत, एक स्टेट और एक सेंटर। तो मान्यवर, ये तो राजीव गांधी जी लाए थे। तो आपके मन में ना ऊपर वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए सम्मान है ना नीचे वाली, क्योंकि चंद महीने पहले तक तो ये एमसीडी से भी लड़ते थे और दिल्ली से भी लड़ते थे। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करें तो मेरे विचार से तीनों गवर्नमेंट की बात होनी चाहिए, और केंद्र सरकार के संबंध में केंद्र से अधिक संवैधानिक शक्ति इलेक्टेड गवर्नमेंट में इस विषय के ऊपर किसी और की नहीं हो सकती। और मैं एक और बात वेदना के साथ कहना चाहूंगा, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड पर भी संवैधानिकता की बात करते हैं, जिस दिन संविधान लागू हुआ उसकी पूर्व संध्या पर प्रदर्शन किया था। महोदय, मैं बताना चाहता हूं, जिस समय इमरजेंसी लगी थी तब भी हमने कभी 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन राजनीति करने का प्रयास नहीं किया। तो वो लोग जब संवैधानिकता की दुहाई देते हैं तो बहुत आश्चर्य लगता है। और जब बार बार यह स्पष्ट किया जा चुका है कि फुल स्टेट नहीं है महोदय, मगर ये फुल स्टेट से भी संतुष्ट होने वाले नहीं है।
इन्हें तो सुपर स्टेट चाहिए, और फुल स्टेट से सुपर स्टेट की दौड़ में मुझे डर इस बात का है कि मेंटल स्टेट में भी ना पहुंच जाएं कहीं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो सकती है। और यह बात इसलिए कह सकते हैं कि 49 दिनों की वह सरकार, जब कांग्रेस पार्टी ने इनकी पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज पहली बार पार कराई थी, उसके द्वारा अगर आप पारित इनका लोकपाल विधेयक देख लें तो उसमें संसद और सुप्रीम कोर्ट और जाने क्या क्या सारी चीजों को एक में मिला लिया गया था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये तो वो पार्टी देश का संविधान छोड़िए, अपनी पार्टी के संविधान में आस्था नहीं रखती। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उसके संविधान में व्यवस्था थी कि उनका जो अध्यक्ष या संयोजक 3 वर्ष के लिए होगा और अधिकतम 2 बार होगा। मगर जो मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार 3 साल पहले उन्होंने वो संविधान में चेंज कर दिया, यानी अब जीवन पर्यंत या अपनी इच्छा के प्रसाद पर्यंत केजरीवाल जी इस विषय के ऊपर रह सकते हैं। तो मैंने इसलिए कहा ना, अपने संविधान के बारे में बात करिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी कार्यकारिणी में ऐसे भी प्रस्ताव पारित किए हैं संविधान के संदर्भ में कि साहब इनके यहां परिवार के भी कितने लोग काम कर सकते हैं, जो मेरे विचार से बड़ी बड़ी परिवार वाली पार्टियों ने भी कभी अपने पार्टी के प्रस्तावों में इन प्रस्तावों को नहीं पारित किया होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत आश्चर्य लगता था कि जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन के स्वरूप से आगे बढ़े थे, तब एक ही पंक्ति में बता देना चाहता हूं, क्योंकि जब आप इसकी बात करते तो क्या क्या नहीं था, कहां से बात शुरू हुई थी। हम राजनीति में नहीं आएंगे, फिर कसम खाते कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, फिर उसके बाद बंगला नहीं लेंगे, फिर शपथ खाते हैं गाड़ी नहीं लेंगे, फिर शपथ खाते हैं सुरक्षा नहीं लेंगे, और आज स्थिति यह है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जितनी बातें ये कहते थे वो सारी चीजें आवश्यक है, मगर यह दर्शाता है, क्योंकि मैं किसी की सुरक्षा के प्रति खिलवाड़ करने की बात नहीं करता, पंजाब जैसा राज्य संवेदनशील है, वहां के मुख्यमंत्री के पास सुरक्षा होनी चाहिए, परंतु मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि ये इस बात में जो कहना चाहते हैं कि इन्होंने कितना बदलाव किया है मान्यवर, इसलिए कभी कभी इनके 10 वर्ष के अंदर चरित्र में इतना बदलाव, ये कहते सबसे जल्दी सत्ता में आए। महोदय मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ हम 1951 बने, हमने 72 साल में कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया, इन्होंने 72 दिन में समझौता किया, तब ये सत्ता में आए। और इसलिए आज दिल्ली की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस करती है, और शायद दिल्ली के लोग ये कह रहे होंगे कि मैं समझता था वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, जिनको पत्थर से हमने बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं संक्षेप में, मेरे विचार से इनको अध्यादेश पढ़ना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए और दिल्ली का अधिनियम पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने को कहते हैं सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जो अपने को सबसे हाई क्वालिफिकेशन का नाज रखते हैं, 2-3 उदाहरण उनके ही बता देना चाहता हूं। जिस समय कोविड की वेव चरम के ऊपर थी, तब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कोविड वैक्सीन का फार्मूला सारी कंपनियों को क्यों नहीं दे दिया जाता। मान्यवर, कोविड वैक्सीन तो छोड़िए, पैरासीटामोल जैसी जो दवा भी अमेरिका ने उस समय हमसे मंगाई थी। अब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ये कह सकता है कि वो चूरन की तरह फार्मूला सबको दे दिया जाए। तो कभी कहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर फिल्म क्यों नहीं लाद दी जाती है, अरे भाई वो सरकार का अधिकार का क्षेत्र नहीं है। और फिर इतना ही नहीं, सिंगापुर में इनको बुलाया, इनविटेशन आता मेयर्स कॉन्फ्रेंस का, तो मुख्यमंत्री होते हुए जाना चाहते हैं। तो मेरे विचार से कम इनको थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। और एक पढ़ने लिखने पे एक तथ्य मैं जरूर बताना चाहूंगा, जब न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में इनकी तारीफ निकली थी तो इनके मुंह से निकल गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार, और उसमें इतनी तारीफ निकलवाना आसान नहीं है, वैसे निकलवाना शब्द निकल गया था। मगर मैं पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहता हूं महोदय कि न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा अखबार नहीं है, वो है यमुनी शिंबुन जापान का। अमेरिका का भी सबसे बड़ा अखबार वो नहीं है, यूएसए टुडे। और इतना ये समझिए, इतना ही नहीं, भारत का टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, और वो भी उनसे अधिक हैं। तो मैं सिर्फ ये बताता हूं, अरे भाई जिस अखबार का नाम लेते हैं कम से कम उनको तो पढ़ लेना चाहिए था। मैं आपको अधिक समय न लेते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं महोदय कि इनको ना पढ़ाई से मतलब है, इन्हें ना पढ़ाई से मतलब है, न लिखाई से मतलब है, इन्हें तो बस कमाई से मतलब है, और वो भी ऊपर वाली कमाई से। और अंत में मैं कहना चाहता हूं सर, अंत में एक लाइन और कहना चाहता हूं कि आज सब लोग मिले
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिले, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, पुरानी धुरानी पार्टी, नई पार्टी, नई नवेली पार्टी, अजब अलबेली पार्टी, सब मिलकर एक हो गए। मगर प्राप्त क्या किया? दोनों ने सिद्धांतों से समझौता किया और कांग्रेस ने भी इतना सयाना दांव चला कि इन्होंने अगर उनका हाथ पकड़ के दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन लिया हो तो अविश्वास प्रस्ताव ले आए, लीड उनको मिल गई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं अंत में कि इन लोगों को आखिर में क्या प्राप्त हुआ, ये पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं कि इनको विधेयक भी नहीं मिला और सम्मान भी नहीं मिला, यानी इज्जत भी गई, बात भी नहीं मिली। तो एक पंक्ति कहता हूं, न तुम ही मिले, आप लोगों के लिए लागू है, न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, दीद मतलब साइट, न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई। सुखेंदु शेखर रे, श्री सुखेंदु शेखर त्रिवेदी ने बड़े जोश के साथ और बहुत शेर शायरी के साथ उन्होंने बात की। त्रिवेदी ने शेर शायरी के साथ बहुत लंबी तकरीर की। अगर उसको उत्तर हमारे पास चतुर्वेदी है, अगर आप त्रिवेदी है तो हमारे पास चतुर्वेदी है। माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी नहीं, डॉक्टर अभिषेक सिंघवी ने कवि का काम ज्यादा किया, वकील का कम किया। कितना कवि का काम आपने किया। श्री सुखेंदु शेखर रे, 9 minutes. Thank you. I am not going to make a political speech because the matter relates to a very important bill relating to National Capital Territory of Delhi. Sir, there is no sound from this microphone. I cannot shout. No volume. Volume, sir. No volume here. I can hear. But I cannot shout, sir. I cannot hear. There is no feedback. No feedback to my ear. Yes, some problems, sir. Go ahead. Some problem. As I have stated, that I am not going to make any political statement, but my submission shall be confined within the parameters of this bill. On 19th of May this year, the Honorable President of India promulgated the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment to Ordinance 2023, which negates a Constitution bench judgment of the Supreme Court dated 11th May 2023 that brought services under GNCTD. There could be some symbolism in the ordinance being promulgated in the middle of the night, as already stated by some of my colleagues, just a few hours after the Supreme Court closed for summer vacation. But I am not on that. Meanwhile, the ordinance has been challenged in the Supreme Court and the matter has since referred to a constitution bench. During the pendency of the matter before a constitution bench of the highest court of the land, the government has introduced this present bill to repeal the ordinance and for further amending the GNCT Act 1991. I wondered as to whether heaven would have fallen had the government waited for the outcome of the Constitution bench where the ordinance is still pending. What is the urgency involved in the matter? What is the urgency? There is no whisper about the urgency in the bill or the statement which have been received just now after the introduction of the bill, that the aforesaid judgment, that is judgment dated 11th of May, posed certain challenges in the efficient administration of the government of NCT of Delhi, which needed to be addressed through appropriate legal interventions. According to me, this is a stigma on the highest forum of our judiciary, which must be deprecated by all conscious citizens of this country. Sir,
in the year 2021, in the matter of Madras Bar Association, the Supreme Court held inter alia, and I quote one line, "A legislation can be declared as unconstitutional if it is in violation of the principle of separation of powers, the rule of law, and Article 14 of the Constitution, that is arbitrariness." Therefore, once there is such a judgment which was delivered in 2001, government ought to abide by that judgment of Supreme Court, which is otherwise a requirement under the Constitution. I am coming to that later on. Sir, the question is whether the Legislative Assembly of Delhi has powers over all matters in List 2 except the matters in entries 1, 2 and 18, which is public order, police and land. In apparent defiance of the 11th May judgment, this bill seeks to amend the JNCT Act for abridgment of the powers conferred upon the JNCT legislation by the Constitution, because the entry number 41 is sought to be taken away, is sought to be inserted through this bill, so 3 will be 4, rightly pointed out by our senior counsel, Mr. Abhishek Manu Singh Bichi. Now, sir, when a constitutional bench comprising 5 judges of Supreme Court declares or interprets Article 239 AA3A of the Constitution, the same is binding upon all courts and authorities in India in terms of Article 141 and 144 respectively. Neither Article 239 AA3A nor Articles 141 and 144 can be negated without a constitutional amendment. I repeat, without a constitutional amendment, this cannot be done. And if at all the government brings, subsequently will have to bring if they wish, because this legislation will be declared null and void. As a student of law, I understand. It will be done. But if the government at all in future brings a constitutional amendment bill, that will also hit by the principle of separation of powers and federalism, which are the basic structures of the Constitution that was held by the Supreme Court right from the Keshavananda Bharati case till Minerva Mill case. Yes. Sir, this bill seeks to render the GNCTD Assembly, or for that matter the Delhi government, virtually toothless and ineffective insofar as the services and service commission are concerned. Even a constitutional bill on this score shall be unconstitutional ab initio, as it will negate federalism and separation of powers already stated by me. Sir, now let me have a look at the bill once. Possibly that will be the final, because 7 minutes already elapsed. Come to part 4A. It says about provisions relating to the maintenance of democratic and administrative balance in the governance of National Capital Territory of Delhi. What a brilliant drafting. To maintain a balance, the original act came into being in 1991. We are in 2023. So for the last 33 years, there was no balance. There was no balance. That is why, all on a sudden, the Kumbhakarna has risen from the deep sleep to maintain a balance. Interestingly, the authority has been proposed to be created. Which authority? Already stated by other members. The Chief Minister, Chief Secretary, Home Secretary. Sir, please give it to me. Please give it to me. Very interesting bill. Chief Minister, Home Minister, Chief Minister, Chief Secretary and Home Secretary.
And whatever may be recommended by the Chief Minister, if it is not accepted by the two bureaucrats, then also it will be passed and the Lieutenant Governor will accept it. So, Chief Minister will be, what should I say, without any authority. He does not have any authority. The bureaucrat will prevail upon him. Sir, in democracy, will of the people is supreme. Vox populi, vox dei. সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই, will of the people. But here the will of the people, which has been reflected through election, the duly elected constitutionally elected government, his chief minister has no power, the bureaucrat will overrule the recommendations of the chief minister. This is a draconian bill. This is against all spirit of the constitution, and every citizen of this country should oppose this bill in the manner, not only inside Parliament, even outside Parliament, voice is to be raised. Sir, finally, with your kind permission, I would like to quote from judgment one line of former Chief Justice Y.V. Chandrachud, the father of the present Honorable Chief Justice of India. Quote, Parliament cannot, under Article 368, expand its amending power so as to acquire for itself the right to repeal or abrogate the Constitution or to destroy its basic essential features. Here is a case where the basic features are being destroyed. And sir, according to me, according to my party, All India Trinamool Congress, this government seeks to insert entry 41 of the list 2 into Article 239A3A, thereby expanding the scope of accepted matters, so that the bill virtually stands against the heaven of freedom into which Rabindranath Tagore wanted his country to awake, as the bill reflects the abyss unrestricted power to ensure emergence of a banana republic. Thank you, sir. Shri Tiruchi Shiva, 14 minutes. Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, I stand to oppose this bill very strongly, for it infringes upon the basic structure of doctrine by crushing the federalism, which is the soul of Indian democracy. Sir, this attempt of this government is yet another a strike on federalism. It is unwarranted, untenable, it is undemocratic, unjustifiable, unfederal, and unconstitutional. Sir, why I am saying all these things? Unwarranted. Sir, after 1991, when the Delhi was granted special status, BJP came to power. Mr. Madanlal Khurana and later Sahib Singh Verma, who were the chief ministers, they insisted for full statehood for Delhi. And later, sir, in 2003, August of 2003, the NDA one government introduced a bill insisting for full statehood for Delhi. So when they are ruling, they want full statehood for Delhi. Then what necessity for this ordinance or this bill, sir? After 2015, Aam Aadmi won the election with a significant margin. Immediately after that, the union government issued a notification that services will come under the control of the union government. And that sparked a legal battle, sir, which lasted for 8 years. And recently, the Supreme Court in 2018 and 2023 constitutional bench has given a unanimous judgment in favor of the Delhi government that they have got every power. Now this bill is attempting to overturn the Supreme Court judgment and override the powers of the state government. Sir, we should just look at it in this manner, sir.
So whenever they are in double standard, when they are in power, they want something. It is intolerance, to say very shortly, if an opposition party is ruling, they will be disturbed by the governors. If it is a union territory, the lieutenant governor will take all the powers and will not allow the state government to function. So in this situation, where is democracy? Sir, our constitution, as you know very well, sir, has given a structure of federalism, which gives the very importance to the regional aspirations can be represented and realized by state governments, and which cannot be done by a centralized union government. Sir, it has also established a mechanism of triple chain accountability. The people hold the legislators accountable, the legislature holds the government accountable, and the government holds the officers accountable. But now, the officers are not under the control of the government of union territory. So what's the use of being there? So this triple chain accountability is broken by way of this attempt. This not only I say here, sir, the Supreme Court has also emphasized very strongly. It should not be severed on any account. Sir, now coming detail into the bill. Why we are opposing? What are the contentious issues? What are the reservations we have? All others have spoken, sir, but we have to enlighten it. Number one, this bill attempts to establish a National Capital Civil Services Authority. As everyone said, it will consist of 3 members under the chairmanship of the Chief Minister and 2 officers, Home Secretary and Chief Secretary. Who are they? Appointed by the Union government. Obviously, one can understand what will be the outcome. The quorum is 2 and the majority will be the decision. Sir, I have moved an amendment which even it may be passed. I think with hope. If at all it is passed, even it won't be of use, sir. Because even if the authority with a majority gives a suggestion to the Lieutenant Governor, he can reject it. So ultimately it goes there. The authority becomes redundant and the Chief Ministership becomes lesser than a rubber stamp. We are very sorry to say these words, sir. A Chief Minister elected by the government has to fulfill the obligations by the mandate is been given to him. But whereas he is not able to have control. Sir, Delhi has been the nucleus of power from Mughals to British. Can anyone say any ruler has ruled without control on their officers, whether he or she? But now this bill paves the way. Sir, where we are heading towards? The government which is accountable to the people, to the legislature, and the government which can hold the officers accountable, now they don't have any control over the officers. Number 2, sir, the Council of Ministers, the Cabinet. Earlier, sir, the notes which are prepared by the ministers. And it will be taken over there. And after the decision, it will be forwarded to the Lieutenant Governor. It is vetted by the Law Department. Now that the Secretary will overlook the Minister, and overall, the Cabinet, which is the Council of Ministers, if they take a decision, the Chief Secretary will come and say, it doesn't come under law or under the rules of procedure, and he will take it to the Lieutenant Governor who can alter it or reject it. So first, the Chief Ministership became redundant. Now the Council of Ministers become redundant. Number 3, sir, any minister, if he takes any decision, the Secretary is the supreme. If the Secretary doesn't agree with the decision of the minister concerned, without the consent of the minister, he can take it directly to the Chief Secretary or to the Lieutenant Governor. So the ministership also becomes redundant. Number 4, sir, Delhi is also like other states run by some 50 around statutory authorities, corporations and commissions. This include industry, tourism, everything. It comes under even transport, water, sewerage, women's rights, child rights and all. All these positions, the chairpersons and the members were earlier nominated by the government, by the Lieutenant Governor on the advice of the government. But now, sir, hereafter, these positions will be appointed only by the Lieutenant Governor. The government has to sit with folded hands. Yes. Sir, one by one, just
though the authority is established, the authority has no say, and even in the authority, the chief minister has no say. Number two, the council of ministers, the cabinet becomes redundant, the minister becomes redundant. Number four, sir, all the commissions, all the corporations, all the statutory authorities will be appointed by the lieutenant governor, and then proroguing and summoning also comes to the power of the lieutenant governor. Earlier, sir, the council of ministers will decide a date and they will represent to the lieutenant governor and he will summon. Now that lieutenant governor can do. So the government cannot, if at all an urgent issue has to be resolved, if the assembly has to be convened, the chief minister or the council of ministers has no power. Sir, kindly tell us. We are not just accusing the government or pointing fingers, what you are doing is wrong, but kindly explain to us why all these things happen. A government which has been elected by the people, they have to cater to the needs of the people. They only know the local people's aspirations. That's why we are pleading for state autonomy. When the voice for decentralization is going up and up, this government is traveling on the opposite direction. Powers are centralized in the union government again and again. What will happen? It will get broken. Sir, India, which is known for federalism, sir, everything is under threat now. Secularism is under threat now. Especially, sir, we are very much concerned that this bill again strikes at the very root of federalism. Sir, let me quote Dr. Baba Saheb Ambedkar. Ambedkar, in November 4, 1948, this bill disregards the constitutional morality. That's what I am trying to drive at. Dr. Ambedkar on November 4th, 1948 in the Constituent Assembly, quote, while everybody recognizes the diffusion of constitutional morality for the peaceful working of a democratic constitution, there are two things interconnected with it, which are not, unfortunately, generally recognized. One is that the form of administration has a connection with the form of the Constitution. The other is that it is perfectly possible to pervert the Constitution. Sir, underscore. The other is that it is perfectly possible to pervert the Constitution without changing its form by merely changing the form of administration and to make it inconsistent and opposed to the spirit of the Constitution. Sir, it is not a statement by Tirthi Siva. It is Dr. Ambedkar in the Constituent Assembly. And emphasizing that, the Supreme Court in its judgment in 2018 refers to the Constitution in these words, quote, constitutional morality is that fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike, as experience has shown that unbridled power without any checks and balances would result in a despotic and tyrannical situation which is antithetical to the very idea of democracy. Sir, what is going on now? Unbridled powers without any checks. Everything is taken over. Sir, we are told now and then, again and again, many a time, that many of the acts that has been enacted during this regime, sir, are transgressing into the powers of the state governments. It is taking away the powers of the state governments. All are heaped with the union government. So this is what the Supreme Court has also said, unbridled power with no checks and balances. Same thing, Dr. Ambedkar has also told, constitutional morality, this disregards constitutional morality. Sir, I earnestly appeal to my fellow colleagues of some political parties who may support the government's decision. My earnest appeal, as Mr. Singhvi told, sir, we are living in an area where there are 100 huts, all thatched roofs. If the last house is burning, the person sleeping in the first house will not sleep. He will go, run and put out the fire with the fire brigade. It is not only to help him, sir, but to safeguard his own, sir.
हर चीज के बारे में, ग्रेड ए अफसर से लेके दानिश अफसर तक व्यापक है, विशाल है। कौन किसी और की सरकार में वित्त का सेक्रेटरी बनेगा, कौन पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी बनेगा, उनके बीच में अदला बदली कब और कैसे होगी, ये माननीय एलजी करेंगे निर्णय, न कि चुनावित सरकार। ये बड़े स्पष्ट प्रावधान है, मैं अभी आपको प्रावधान के नंबर नहीं दे रहा हूं। दूसरा, जितने भी सतर्कता के अधिकार क्षेत्र हैं और जितने भी नॉन सतर्कता, नॉन विजिलेंस, वो सभी केसेस अनुशासनहीनता के विषय में सब इस अथॉरिटी में आएंगे सुझाव के लिए और माननीय एलजी के पास निर्णय के लिए। इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। उद्देश्य है एक भय और हिस्टेरिया का माहौल बनाना, एक खौफ पैदा करना, जिससे कि आप इन सभी सचिवों को कंट्रोल कर सके, जो कि दिख रहा है दिन प्रतिदिन। तीसरा, ये अथॉरिटी में 3 व्यक्ति हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा ओहदा दिया है, अध्यक्ष बनाया गया है। ये अजीब सा अध्यक्ष है दोस्तों। कोरम है 2 लोगों का, ये एक चेयरमैन है बिना चेयर के। मैंने वैश्विक और भौगोलिक रूप से आज तक कहीं नहीं देखा मेरे सीमित अनुभव में कि एक चुनावित चीफ एग्जीक्यूटिव 2 सचिवों के नीचे आएगा। ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे, ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा। और उसके बाद, और ये सब प्रावधान है, एक एक चीज में जो बोल रहा हूं प्रावधान है, उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। चौथा दोस्तों, बाद में चौथा, जितने बोर्ड्स हैं, समितियां हैं, इससे ज्यादा असंवैधानिक, गैर कानूनी कागज का टुकड़ा एक बिल के माध्यम से शायद ही आज से पहले कभी संसद भवन के भीतर लाया गया होगा। और अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं महाभारत के एक अंश का वर्णन करना चाहूंगा, जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता में लिखकर बताया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक शांति दूत बनके पांडवों की ओर से हस्तिनापुर जाते हैं शांति का प्रस्ताव लेकर। कवि लिखते हैं, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान कहते हैं, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। सर, इसमें दिल्ली बिल का सार है। सर, हम न्याय की गुहार लगाने आपके सामने आए हैं, अपने हक मांगने आए हैं, अपने हक से ज्यादा मांगने नहीं आए। सर, मैं अपने वक्तव्य को 3 भाग में बांटता हूं। पहला, कि ये बिल कैसे एक राजनीतिक धोखा है, पॉलिटिकल फ्रॉड है। दूसरा, ये कैसे एक संवैधानिक पाप है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिन है। और तीसरा, कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकजैम यानी कि प्रशासनिक गतिरोध दिल्ली में कैसे पैदा कर देता है। सर, पहला, राजनीतिक धोखा। यह कहानी है सर 1977 से लेकर 2015 की। लगभग 40 साल का लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित करने के लिए किया। 1977 में जब 3rd मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दिल्ली में था, उसमें जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने मता पास कर कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाएंगे। लगातार पूर्ण राज्य की दर्जे की मांग करते करते ये 1989 का लोकसभा का मैनिफेस्टो में बीजेपी का लाया हूं। 1989 के मैनिफेस्टो में पेज नंबर 361 पे पॉइंट नंबर 10 पे ये कहते हैं, ग्रांट स्टेटहुड टू यूटी और दिल्ली। यानी कि 1989 से लेकर लगातार ये लोग दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते रहे। यहां तक कि
जब 1991 में कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में विधानसभा का गठन किया, उससे भी ना पर्याप्त मानते हुए लाल कृष्ण अडवाणी जी, मदन लाल खुराना जी सबने बयान दर्ज कराए कि यह भी दिल्ली के साथ न्याय नहीं है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और हम इसके लिए आंदोलन चलाएंगे। और लगातार इन लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया। सर 1998, 1999 में फिर अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने, ये 1999 का मैनिफेस्टो है, ये जारी कर कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। पेज नंबर 132, पॉइंट नंबर 31, वी विल गिव फुल स्टेटहुड टू दिल्ली। सर इन लोगों ने बड़ा आंदोलन चलाया, संघर्ष किया, सड़कों पे लाठियां खाई, न जाने क्या क्या किया दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। और अंततः वो दिन आया जिस दिन वाजपेयी सरकार के उप प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण अडवाणी जी इस सदन के भीतर एक बिल लाए, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2003, जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है। यह बिल अडवाणी जी इस सदन के भीतर लाए और कहा कि दिल्ली को अधिकार देने की जरूरत है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भाजपा दिलाएगी। यहां भी बात खत्म नहीं होती सर। इसके बाद 2013 के अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। इनकी जून 2013 में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, उसमें मता पास कर कहा हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। यहां तक कि इनके सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ये इन सब ने सर लगातार बातें कही और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के सामने रखती रही। सर ये बिल सिर्फ संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं है, ये बिल लाल कृष्ण अडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन लाल खुराना जी का, सुषमा स्वराज जी का, अरुण जेटली जी का, सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर मैं माननीय गृह मंत्री जी का बयान लोकसभा में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने यह बात रखी थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, नेहरूवादी मत बनिए, अडवाणीवादी बनिए, वाजपेयीवादी बनिए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आज आपके पास ऐतिहासिक मौका है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर इस बिल को लाने का असल कारण क्या है? यह बिल क्यों लाया गया है? पिछले 25 साल में दिल्ली में 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए। 6 के 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। यहां तक कि 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बनाई। क्योंकि ये पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले 25 साल भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो सरकार को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। ना रहेगी सरकार और ना रहेगा चुनावों का महत्व, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन मैं आज इस मन से भाजपा से अनुरोध करूंगा कि कम से कम लाल कृष्ण अडवाणी जी को न्याय दीजिए, कम से कम उनकी इच्छा पूरी करिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर मेरा दूसरा भाग कि कैसे ये बिल एक संवैधानिक पाप है। सर पहली चीज, ये अब्यूज ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स है, आर्टिकल 123 जो संविधान का देता है। संविधान ये कहता है, और वाईवी चंद्रचूड़ साहब का AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बड़ा महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है, जिसने कहा कि ऑर्डिनेंसेस सिर्फ आपातकालीन और विषम परिस्थितियों में लाए जाएंगे। ऐसी कौन सी आपातकालीन और विषम परिस्थितियां आ गई कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन के भीतर बदलना पड़ गया? दूसरा सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन के भीतर 5 जजों के संवैधानिक पीठ के सर्वसम्मति के फैसले को बदल के आज भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते, आपको जो ऑर्डर जारी करना है करो, हम चंद दिनों के अंदर ऑर्डिनेंस लाकर उस फैसले को बदल देंगे। दे हैव चैलेंज्ड द मैजेस्टी ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सर। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आजकल जो ऑर्डिनेंस लाने की
जो एक फेटिश इस सरकार ने देखी, चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल हो, चाहे वो फार्म बिल हो, चाहे ईडी के डायरेक्टर का एक्सटेंशन हो, जो ये सारी चीजें ऑर्डिनेंसेस के माध्यम से इन्होंने करी थी, इस बिल का हश्र भी वही होगा जो सारे पुराने बिलों का हुआ था। सर, थर्ड बिंदु कि कैसे ये बिल संघीय ढांचे को एरोड करता है। हमारा भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट का 2023 का 2018 का संवैधानिक पीठ का फैसला कहता है कि दिल्ली के पास एक यूनिक फेडरल आइडेंटिटी है, यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है, और भारत का संविधान जो हमें संघीय ढांचा देता है, जो शक्तियां देता है, उन शक्तियों को एनक्रोच करने का काम ये सरकार करती है, हमसे अफसरशाही और तमाम शक्तियां छीनकर। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का वो एक वाक्य पढ़ के सुनाना चाहूंगा। द मेजॉरिटी इन द 2018 कॉन्स्टिट्यूशन जज बेंच हेल्ड that while the NCT of Delhi could not be accorded with the status of a state, the concept of federalism is applicable to Delhi. हम पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य का दर्जा एक संघीय ढांचे के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली को मिलता है। उसके बाद सर, इन लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। आज बिना संवैधानिक संशोधन लाए संविधान को बदल दिया, मात्र एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, जो आज तक शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सर, इसके बाद ये बिल पार्लियामेंट्री अंडरमाइन करता है प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को। भारत का संविधान कहता है सर कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मिलके लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेही होंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें से परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि अफसरशाही को छीनकर ये पूरी तरीके से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल, जिसपे सरकारें चलती हैं देश में, उसे ध्वस्त करता है। और आखिरी बिंदु संवैधानिक अपराध का, ये ट्रिपल चेन ऑफ अथॉरिटी को तार तार करता है सर। ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि अफसरशाही की जवाबदेही मंत्री को, मंत्री की जवाबदेही लेजिस्लेचर को, और लेजिस्लेचर की जवाबदेही जनता को। इसमें से अगर आप अफसरशाही हटा देते हो तो फिर जवाबदेही की जो ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है ध्वस्त हो जाती है। तो ये काम करके संवैधानिक अपराध एक प्रकार से सरकार ने किया है। सर, मेरा आखिरी भाग, ये कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव हाराकिरी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव गतिरोध पैदा करता है। ये कहता है सिर्फ उपराज्यपाल ही ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे एक समिति के माध्यम से, यानी कि अफसर अब मुख्यमंत्री की नहीं सुनेगा, मंत्रियों की नहीं सुनेगा। अगर अब दिल्ली में किसी के घर में बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, किसी के बच्चे का स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा, तो वो उपराज्यपाल के पास जाएगा, अपने मंत्री मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएगा। क्या लोग जानते हैं उपराज्यपाल कहां रहता है? उपराज्यपाल कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ा, उपराज्यपाल ने कौन सा चुनाव जीता? लेकिन सारी शक्तियां एक चुनी हुई सरकार से निकालकर उपराज्यपाल को देता है। ये आगे कहता है सर ये बिल कि हम एलजी को सोल डिस्क्रिशन देते हैं, स्वयं के विवेक से फैसले लेने की तमाम शक्तियां। आज तक उपराज्यपाल और गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से बाध्य थे, लेकिन यह बिल उपराज्यपाल को सुपरसीडिंग पावर देता है। आगे सर, यह बिल जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें एक जुडिशियल अथॉरिटी बना देता है। यह कहता है अफसरशाही तय करेगी कि मंत्री का फैसला सही है कि मंत्री का फैसला गलत है, और अगर अफसर को मंत्री का कोई फैसला पसंद नहीं आया तो अफसर मंत्री का फैसला लागू करने से मना कर सकते हैं। और सर, यह बिल अथॉरिटी, कमीशंस और कॉरपोरेशंस बनाने की, तमाम गठन करने की, नियुक्ति करने की शक्तियां सारी की सारी केंद्र सरकार को दे देता है, यानी कि सरकार की चाबी एक प्रकार से केंद्र सरकार को हाथ में पकड़ा देता है। सर, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी सी जितनी पार्टी है, एक सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी है। सर, ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप कहलाती है। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने 3 बार भाजपा को दिल्ली में हराया और 2 बार 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश की सरकार बनाई। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगभग शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसके 161 विधायक और 11 सांसद है। और ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसका काम देखने के लिए फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड जनरल के पूर्व प्रमुख बान की मून आते हैं। सर, मैं आज अपने साथी जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकार चलाते हैं उन्हें कहना चाहूंगा, आपकी जरूर कुछ मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते आपने ये फैसला लिया इस सरकार के इस बिल का समर्थन करने में। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आग जब लगेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर है, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है,
लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, लेकिन जब आपके घर में आग लगेगी आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और सर, मैंने अपनी बात शुरू करी थी महाभारत के एक अंश से, मैं समाप्त भी महाभारत के एक अंश से करूंगा सर। बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो युधिष्ठिर ने शंखनाद करने से पहले एक घोषणा करी और कहा कि यह धर्म की लड़ाई है। मेरी सेना में खड़े मेरे पीछे जितने योद्धा हैं, अगर उन्हें लगता है कि धर्म मेरे साथ नहीं कौरवों के साथ है, तो मेरी सेना छोड़कर सामने वाली मेरे दुश्मन की सेना में जाकर खड़े हो जाएं, उनकी ओर से युद्ध करें। और अगर कौरव सेना में कोई योद्धा है जिसे लगता है कि धर्म युधिष्ठिर के साथ है, पांडवों के साथ है, तो आप कौरवों की सेना छोड़कर मेरी सेना में आइए, मैं बाहें फैलाकर आपका स्वागत करूंगा। उस समय कौरवों का एक भाई युयुत्सु कौरव सेना छोड़कर पांडवों की ओर आया और पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा। मैं उसी बात का जिक्र करते हुए आज इस सदन में बैठे तमाम सांसदों को कहना चाहता हूं, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जहां ज्यादा जिम्मेदारी बनती है राज्यों के हकों की, अधिकारों की रक्षा करने की। मैं मांग करता हूं, आज आप लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस बिल को हराइए। आज ये इतना असंवैधानिक और गैर कानूनी बिल अगर ये सफल हो गया तो हो सकता है आज के बाद आने वाले समय में ये लोग देश में चुनाव ही ना कराएं, चुनावी प्रक्रिया को खत्म कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सस्मित पात्रा, Thank you. 12 minutes. Honorable Chairman, sir, I rise to speak on behalf of the Biju Janata Dal. Sir, speaking on this bill in the Lok Sabha, our party's senior member of parliament and leader of the BJD parliamentary party in Lok Sabha, Shri Pinaki Mishra ji has already made us stand very clear and has made it very eloquently and succinctly expressed that the Biju Janata Dal's equidistant stand from the BJP and the Congress and the reasons for the same, and the fact that BJP is our principal opposition party. I reiterate and place on record that we are equidistant from the BJP and the Congress, and our principal opposition party in Odisha is the BJP. Our stand today does not change anything in that regard. Sir, BJD is in favor of this bill because it supports the constitutional standpoint of this bill and the Parliament's power to enact legislations and the Parliament's legislative competence to such matters. Sir, I need a protection, sir. You can imagine the kind of ruckus being made. I should be heard. 4.5 crore people in Odisha want to hear, whether people here want to hear or not. Honorable members, please keep calm. Thank you, sir. Sir, in July 4th, 2018, the Supreme Court judgment in its civil appeal has very clearly said on पैरा 277, और ये मैं सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रेफर कर रहा हूं, 2018 जुलाई 4। क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ सिविल अपील 2357 सेज, however, if the parliament makes laws in respect of certain subjects falling in the state list or the concurrent list, this is referring to Delhi, the executive action of the state must conform to the law made by the parliament. ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरा नहीं है। तो ये पहला विषय है जो मैं आपके पास रखना चाहता हूं, why the parliament has the legislative competence to bring something here. Second, 11th May 2023 सर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है इन सिविल अपील अगेन 2357 by Justice Chandrachud, Justice M.R. Shah, Justice Krishna Murari, Justice Hima Kohli and Justice Narasimha. पैरा 164 को मैं रेफर करना चाहता हूं, सबसेक्शन C. What does the judgment say? In addition to the entries in list 1, Parliament has legislative competence, and I repeat, has the legislative competence over all matters in list 2 and list 3 in relation to NCTD, National Capital Territory of Delhi. तो ये दूसरा विषय है। 2018 के बारे में मैंने बोला, 11 मई 2023 का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसको मैंने उल्लेख किया। अब मैं तीसरे विषय पर आता हूं। जुलाई 20, 2023, अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का और एक जजमेंट आता है इन रिट पिटीशन 678 ऑफ 2023। ये आता है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा का। एंड ऑन पेज 10, पैरा 17, ये जजमेंट क्या कहता है आखिरी पैराग्राफ में?
और ये क्या विषय था मान्यवर? ये विषय था कि दिल्ली एनसीटी ऑर्डिनेंस जो है उसको जो है आप स्टे प्रोवाइड करें, सरकार को बोले कि दिल्ली एनसीटी ऑर्डिनेंस को वो कहीं ना कहीं से इंप्लीमेंट ना करें। दैट वाज द प्रेयर। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और आखिरी लाइन में सुप्रीम कोर्ट सेज, एंड आई कोट, IA number 13050 of 2023 seeking a stay of the NCT ordinance is dismissed। तो स्पष्ट तौर से सुप्रीम कोर्ट ये जो प्रेयर किया है एनसीटी ऑर्डिनेंस के बारे में उसको डिसमिस कर देता है। तो ये जो बार बार कहा जाता है दैट द लेजिस्लेटिव पावर डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द मैटर इज पेंडिंग, दैट इज ऑन अ सेपरेट मैटर, नॉट ऑन द मैटर डीलिंग विद जुलाई 20, 2023। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास जो मैटर गया है वो मैटर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास मैटर दिल्ली एनसीटी का नहीं गया है। क्या है? What are the contours of power of Parliament to enact a law under Article 239AA7, and whether the Parliament in the exercise of its powers under 239AA7 can abrogate the constitutional provisions of governance for NCT? So Delhi Ordinance Bill specifically is not being placed before the Constitution bench. The points of law, जो दो points of law है वो place किया गया है, यह स्पष्टता होनी चाहिए। Then I come to Constitution of India, संविधान पे आता हूँ। 2018 जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मैंने बोला, 11 मई सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला, 20 जुलाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला। अब मैं संविधान पे आता हूं। संविधान धारा आर्टिकल 239AA सब क्लॉज 3B क्या कहता है मान्यवर? Nothing in subclause A shall derogate from the powers of Parliament under this Constitution to make laws with respect to any matter of a union territory or a part thereof। तो पार्लियामेंट को पूरा अधिकार मिलता है कि अगर आप ऐसी कोई भी लॉज आती हैं तो पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी डेरोगेटेड, कैन नॉट बी डिक्लाइंड, कैन नॉट बी डाइल्यूटेड, कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पावर्स टू अंडरटेक देयर एक्टिविटी ऑन एनी मैटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी। संविधान कहता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या कहेगा? दैट्स अ सेकेंडरी इशू। नाउ वी कम टू 239AA, 7A एंड 7B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आखिरी पड़ाव पे हूं। अब कहा जाता है कि whether the parliament has the legislative competence, बीजू जनता दल पार्लियामेंट के साथ है, बीजू जनता दल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, बीजू जनता दल that the parliament has the legislative competence to undertake such an activity उसके साथ है। So what does the constitution say? 239AA article clause 7A and 7B। What does 7A say, sir? 7A कहता है Parliament may, by law, make provisions for giving effect to or supplementing the provisions contained in the foregoing clauses and for all matters therein or consequential thereto। इसका मतलब क्या है? सारा आज बता देता हूं कि पार्लियामेंट के पास तमाम वो पावर्स हैं जिससे कि 239AA जो कि दिल्ली एनसीटी के बारे में है उस पर अपने रूल्स, अपने लॉज कर सकता है। 7B, any such law as is referred to subclause A shall not be deemed to be an amendment of this constitution। तो जो बात आती है बार बार constitution amendment की, clause 7B बहुत clearly संविधान का बताता है that this is not any changes in 239AA, 7A and 7B के तहत is not considered as a constitution amendment, it can be undertaken। माननीय अब मैं और 2-3 मिनट लूंगा, मैं खत्म करूंगा। So sir, this is a constitutional issue. This is a legislative issue. This is not a political one. This is an issue which is before the power of the parliament to legislate and its legislative competence. It's not about parties or governments. Sir, किसी ने कहा था, एक बहुत बड़े महापुरुष ने, एक बहुत बड़े लीडर ने, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, संविधान रहना चाहिए, इस देश का संविधान, इस देश की सोच रहनी चाहिए। So with these words, and the matter is pending before the court, we would leave it at that. Let the constitution bench come back to it, but that does not take away the legislative competence of the parliament. We will continue our equidistant policy from both the BJP and the Congress, and Biju Janata Dal, led by our leader and Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji, will continue to support the constitutional position and the parliament's power to enact this piece of legislation. Thank you. Jai Hind. Bande Utkal. Thank you. माननीय वी विजय साई रेड्डी।
Reddy ji, you have 12 minutes. Please let him speak, please. Thank you. Please. Thank you, Deputy Chairman, sir. No comments while sitting on chair. Sir, I, on behalf of my party and my Chief Minister, Y.S. Jagan Mohan Reddy garu, is to support this bill, and I need to respond in this regard while putting forth my arguments, observations. I will have to respond Manu Singhvi ji and also Raghav Chadda ji, who is not seen here. No. Please, no. Sir, the crux of the entire bill has to be understood in the light of the provisions of Article 239AA, as my colleague has pointed out, sir. Sir, 239AA Clause 3 has got 3 subclauses. Subclause A, Subclause B, Subclause C. Sir, Subclause A states, Dilli legislature has got the power to make the laws, insofar as the issues are concerned, except public order, law and police. Sir, Subclause B states that Parliament shall have the power to make the laws with respect to any matter of our Dilli, any matter. Sir, the subclause C states that in the event of clash between the Dilli government and the Parliament, the law made by the Parliament shall prevail, and the law made by the Dilli government will become null and void. This is the Constitution clearly provides Parliament an upper hand when it comes to the making laws for Dilli. Therefore, the argument put forth by AAP and also the learned senior advocate Manu Singhvi ji observations are not will not stand before the law, sir. Then coming to the Supreme Court judgment, the second issue which I am dealing with, sir. Sir, on the issue, please. On the issue whether the Parliament can make the law on services in Dilli, that is the issue. The Supreme Court has categorically stated, quote, in verbatim, the power of Parliament to enact the law granting government executive power over services is not in contention. It is now a settled position of law. So therefore, Supreme Court has not stated anything against the government or said any Parliament is not barred. Parliament is barred in making the rules in respect of services, sir. The second point, sir, hence on the issue whether Parliament can make the law to limit the executive power of Dilli government over services. In this regard, the Supreme Court has said, quote, sir, the executive power of Dilli government shall be subject to and limited to the executive power conferred upon by the central government, by the Constitution or law made by the Parliament, sir. So Supreme Court is very clear and very categorical, sir. The cumulative reading of these two observations of the Apex Court supports this bill. Therefore, YSR Congress Party supports this bill, sir. Sir, even the Supreme Court has noted in verbatim, sir, quote, the purpose of the Article 239AA is to confer expanded legislative competence upon the Parliament when it comes to the Dilli, since it is a capital of the country and therefore must be dealt with different considerations. This is what the Supreme Court judgment is, sir. Therefore, the arguments that have been put forth by Honorable Senior Advocate does not stand for judicial scrutiny, sir. Sir, I'll have to oppose I'll have to counter Raghav Chadda ji, sir. There has been a lot of controversy surrounding the bill, sir. This controversy has been created only by Congress Party, AAP and other supporting parties, that is INDA. And it is an attempt to mislead the public for their own selfish political gain, sir. Sir, Deputy Chairman, sir, please listen to me, sir. In fact, the very member of this August House, my friend Raghav Chadda,
Raghav Chadha ji has pointed out, sir, he has said, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ हमारा अकेला मकान तोड़े ही है. That is what he has said. Sir, I am responding to Raghav Chadha ji. He has also said that certain non-NDA parties are under compulsion and coercion to support this bill. That is what he has stated. Please stop it. ED may come to you also. Please. Sir, Please, no. Sir, I would like to. No cross-talk, please. I would like to remind Raghav Chadha ji that the fire doesn't start just like that, sir. Fire doesn't start without fuel. It is Aam Aadmi Party which has put the fuel. That is the reason why whole confusion and the entire state of affairs which are prevailing now, sir. I would only advise the honorable member Raghav Chadha ji not to play with the fire, what he has referred to. Not to play with the fire, because the very fire which he has put forth may engulf, he himself may get engulfed in that, sir. Sir, it is clear, it is very clear that if this bill is passed, the Aam Aadmi Party, that is the official name, I have no hesitation to say that it is absolutely anarchy party, AAP. And to put it in Hindi, sir. I will not yield to you. No, sir. Nothing is going. The record will be checked. Let them get an opportunity. Whenever they get an opportunity, they can speak. Please take it. I will not yield, sir. He is not yielding. I am not yielding. I am not yielding, sir. Please continue. I will put one step forward and say, Tanashahi Party. That is what they are doing now. Tanashahi Party. Anarchy Party. What they are doing is nothing but an anarchy, sir. Please take Can no longer Dilli for selfish and ulterior motives. Sir, please. Sir, I have to bring to your kind notice. One of the observations made by one of their founder members, sir. Sir, one of the founder members of Aam Aadmi Party, famous personality, has categorically said, he was poet and he was very popular leader also, Kumar Vishwas. What did he say? What did he say? Sir, he has made an allegation that the convener of the party, that is Aam Aadmi Party, has supported separatists and collected funds from the separatists for the elections. That is what the state of affairs, sir. Sir, it is not me who is saying this. It is the founder member of their party. It is the founder member of their party who has said it. Please, you know, Raghav Chadha ji, you will come to you. There are some more issues. माननीय वीवी जैसा रेड्डी जी, आप जानते हैं माननीय चेयरमैन ने कहा जो भी बातें आप कहते हैं उसको सब्सिट्यूट करना पड़ता है यहाँ पे। जो आप कहते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। Raghav Chadha has commented on YSRCP. That is the reason why I am responding to him, sir. आपस में कमेंट ना करें, स्पीक ऑन द बिल, प्लीज We won't collect the funds from the separatists. Please. We have not collected the funds from separatists. आपस में कमेंट नहीं, प्लीज address the chair. Sir, I will respond to him appropriately, sir. Sir, I would like to know why they need power. Why they need power? Is it to support the separatists? Is it to support the anti-nationals? They require power. Please listen. Please listen. Raghav Chadha ji, back to your seat. देशद्रोह
Many members like me would like to know what happened to the founder members of Atma Aadmi Party like Shanti Bhushan, Prashanti Bhushan, Yogendra Yadav, Kumar Vishwas, Ashutosh. What happened to them? It is their opportunistic politics, and because of that they have backstabbed them, and then they have unseated them, and these people have captured the power, and it is and I have no hesitation to say they don't fit to rule the Delhi government, sir. And finally, I would like to say one thing, sir, that Delhi is not belonging to Aam Aadmi Party. Delhi belongs to every citizen of this country. Every citizen of this country. Delhi, we have every right, and if at all something happens to Delhi, please go back to your seat. Please, दूसरे की सीट पर न बैठे. Please go back to your seat. Please. Address. Mani B. Vijay Reddy ji, address to the chair. Yes, please. Sir. Sir. Or no cross talking. Okay, sir. Please. We are. Sir, I am here to debate whether the bill is constitutionally valid, not the politics of Aam Aadmi Party, sir. Right. And whether the Constitution as well as the Supreme Court both have said that this bill is constitutionally valid and perfectly within the precincts of the law. Therefore, we support this bill, sir. I have not said anything against Aam Aadmi Party. I am just bringing it to the notice of this august house what their founder members have said. What their founder members have said. And I reiterate once again that absolutely anarchic party, absolutely anarchic party can't act like this. Thank you very much. Thank you. Thank you. Dr. Radha Mohan Das Agrawal. माननीय उपसभापति महोदय, मैं दिल्ली राजधानी राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 के समर्थन में बोलने खड़ा हुआ। महोदय, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कोई भी परिस्थिति हो सत्य बोलते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र। एक वो जो हमेशा सत्य बोलते हैं, कभी कभी मजबूरी में असत्य बोलते हैं, नरोवा हस्ती, धर्मराज युधिष्ठिर। एक सामान्य नागरिक होते हैं जो मजबूरी में सत्य भी बोलते हैं, कभी कभी असत्य भी बोलते हैं। 2013 के बाद इस देश के राजनीतिक परिवेश में एक नया प्राणी उदय हुआ है, जो गीता पर शपथ लेकर कहता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, झूठा ही बोलूँगा और झूठा ही बोलता रहूँगा, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। अध्यक्ष महोदय, 2014 में जब यह पार्टी सरकार में आई थी तो दिल्ली के व्यापारियों ने बड़े समर्पण भाव से इसका समर्थन किया था। दिल्ली के व्यापारियों के साथ इन्होंने एक बैठक की। बैठक में दिल्ली के व्यापारियों को कुछ सपने दिखाए। क्या थे वो सपने? हम रेडी टू यूज एंड शिफ्ट मार्केट बनाएंगे। 2014 एक भी मार्केट नहीं बना। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के सारे बाजारों को मॉडल बाजार बना देंगे। एक भी बाजार मॉडल नहीं बना। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के बाजारों को, क्योंकि लोडिंग और अनलोडिंग नहीं होती है, हम रिलोकेट करेंगे। एक भी बाजार रिलोकेट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में बिजली का बिल कम करेंगे। सच्चाई यह है कि कमर्शियल का बिल दिल्ली में सारे अधिभार को छोड़ करके सबसे अधिक है, पूरे देश में सबसे अधिक है। 9 रुपए से लेकर के 14 रुपए तक का बिल देना पड़ता है। इन्होंने कहा हम दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली का विकास कराएंगे। 9 साल के इतिहास में अगर नितिन गडकरी न होते तो इन्होंने एक भी फ्लाईओवर दिल्ली में नहीं बनवाया है। इन्होंने दिल्ली के व्यापारियों से कहा 10 मिनट की बारिश में आपके यहाँ पानी लगता है, हम इसका इलाज कर देंगे। आज की स्थिति यह है कि 10 मिनट तो दूर, 2 मिनट भी पानी बरस जाए तो पुरानी दिल्ली पानी में डूब जाती है। इन्होंने कहा कि
कि हम आपके हाउस टैक्स को, चुप रहो, इन्होंने कहा कि हम हाउस टैक्स को कम करेंगे। सच्चाई क्या किया इन्होंने? कमर्शियल टैक्स को 3 गुना किया। और उपसभापति महोदय, यह अकेला राज्य है जहां व्यापारी कमर्शियल टैक्स भी देता है और अपने दुकान के सामने का कूड़ा उठाने के लिए 500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक का शुल्क भी अदा करता है। इन्होंने वादा किया था कि हम झोपड़ी झुग्गी वालों को पक्का मकान बना के देंगे। सच क्या है? भारत सरकार ने करोल बाग में 8000 मकान बनाए और शिफ्ट किया। जब इनको मालूम हो गया कि झोपड़ी झुग्गे वाले इस पक्के मकानों में चले जाएंगे तो हम इनका शोषण करके इनका वोट नहीं ले पाएंगे, तब से लेकर आज तक इन्होंने भारत सरकार को दिल्ली में झोपड़ी झुग्गी के पक्के मकानों बनाने के लिए एनओसी तक नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने वादा किया था कि हम दिल्ली के 351 सड़कों को रेजिडेंशियल की जगह पर कमर्शियल परमिशन देंगे। सच यह है कि आज 9 साल हो गया, एक भी सड़क को इन्होंने रेजिडेंशियल से कमर्शियल में बदलने का काम नहीं किया। जब अभी चुनाव हो रहा था एमसीडी का, एक मुख्यमंत्री गाजीपुर के पहाड़ पर जाता है, कुतुब मीनार की ऊंचाई पर चढ़ता है, कहता है दिल्ली कूड़े से डूबी हुई है, एमसीडी हमको दे दो, हम दिल्ली से कूड़ा खत्म कर देंगे। और सच्चाई क्या है? बजट में व्यवस्था करने के बाद कितनी क्रूर है यह दिल्ली सरकार, इसने अपने ही एमसीडी के लोगों से कहा हमने बजट में व्यवस्था की होगी, लेकिन जो व्यवस्था 850 रुपए करोड़ की कूड़े को हटाने के लिए की है वो हम तुमको नहीं देंगे। अपने ही सरकार को इन्होंने पैसा नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था कि दिल्ली में व्यापारिक विस्तार करने के लिए हम झोपड़ी और हम ट्रेड फेयर लगाने का काम करेंगे। दिल्ली के व्यापारी आज भी इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली में कोई ट्रेड फेयर लगाने का काम ये लोग कर सकें। इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम लाएंगे। 700 करोड़ रुपया खर्च करना था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा विज्ञापन पर 1100 करोड़ खर्च करने वाली ये सरकार दिल्ली के यातायात पर 700 करोड़ रुपए तक नहीं खर्च कर पाई। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस प्रकार से दिल्ली के लोगों को धोखा दिया तो किया क्या? मैं बैठा था कोपू की बैठक में, अमर पटनायक जी हमारे मेंबर थे, उन्होंने कहा जल्दी जाइए दिल्ली डूब रही है, पानी लग गया। मैं उठ करके भागा, मैं वेस्टर्न कोर्ट में रहता हूं, वहां पहुंचा। वेस्टर्न कोर्ट में पीने के लिए पानी नहीं था। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोला वजीरपुर सेंटर डूब गया, इसलिए पूरे दिल्ली को पीने का पानी नहीं मिलेगा। कैसी शर्मनाक स्थिति पैदा कर दी। पहली बार अध्यक्ष महोदय 2019 में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और दिल्ली में कोई भी बाढ़ नहीं आई थी। इस साल सिर्फ 3,59,00,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और पूरी की पूरी दिल्ली डूब गई। इसलिए डूब गई कि इन्होंने काम भी नहीं किया। 2 साल तक सिंचाई विभाग की बोर्ड की इन्होंने बैठक नहीं की। बैठक की डेट तय की, दिल्ली ने मुख्यमंत्री ने आने का वादा किया, मुख्यमंत्री गायब हो गया। दूसरी महिला मंत्री पहुंची, वो भी गायब हो गई। आज तक इन्होंने दिल्ली को यमुना के बाढ़ से रोकने के लिए 9 साल की सरकार हो गई, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की। इन्होंने किया क्या? परिवहन बस घोटाला किया। इन्होंने किया क्या? उपराज्यपाल ने अभी 437 लोगों को निकाला है। कोई सलाहकार था, कोई रिसर्च फेलो था, कोई विशेषज्ञ था, कोई रिसर्च एसोसिएट था, कोई कंसल्टेंट था। और वास्तव में क्या था? कोई किसी विधायक का आसपास का था, उसका भाई था, कोई किसी मंत्री का रिश्तेदार था, कोई आप पार्टी का कहीं का कन्वेनर था। ऐसे ऐसे लोगों को इन लोगों ने आरक्षण के सारे नियमों को धता बताते हुए बिना प्रॉपर तरीके से 60,000 से लेकर के 1.5 लाख तक रुपए तक की मासिक वेतन पर रखने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के 150 ऐसे चौराहे हैं अध्यक्ष उपसभापति महोदय, जहां अगर आप जाएंगे तो आदमी अपने हाथ में तख्ती लेकर खड़ा रहता है दिल्ली के सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए। एक एक चौराहे पे 4-4 आदमी, उनको तनख्वाह दी जाती है 20,000, लेकिन चेक से दिया जाता है 4,000। ये 16,000 रुपया
ये लोग उसको कहां से पैसा लाके देते हैं, शायद अगर ये बताते तो बहुत बेहतर होता। और अध्यक्ष महोदय, जिसका सबसे बड़ा ढिढोरा पीटते हैं, मोहल्ला क्लिनिक। अभी कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री आए थे, इनके स्वास्थ्य मंत्री के साथ अभी वो एक मोहल्ला क्लिनिक देखने गए थे। देखने के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट आज भी उस मंत्री के ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। और क्या लिखा उन्होंने? विजिटेड ए मोहल्ला क्लिनिक इन दिल्ली विद हार्डली एनी पीपुल देयर। एक आदमी भी वहां नहीं था। आवर क्लिनिक इन कर्नाटका हैव मोर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग लैबोरेटरीज टू बी इमीडिएटली टेस्टेड। यानी वहां पर हमारे कर्नाटक में ऐसी लैबोरेटरीज हैं जो तुरंत जांच कर लेते हैं। और आगे क्या लिखा? आई गेस इट इज ए ओवर हाइप्ड स्टैंड एंड आई कम बैक फीलिंग डिसअपॉइंटेड। यानी इन लोगों ने छोड़िए उन्हें, यानी उन लोगों ने ये कहा कि इन लोगों ने सिर्फ शब्द बयानी की है, झूठ बोला है, मुझे तो यहां से बहुत निराश होकर जाना पड़ेगा। और अध्यक्ष महोदय, जब कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यह कह रहे थे तो अभी तो जुमा एक महीना उनको आए हुआ है। वो भारत के कर्नाटक की भाजपा सरकार की उपलब्धियों को बता रहे थे। अध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय, अभी माननीय सिंधवी साहब यहाँ बोल रहे थे और हमसे बता रहे थे मार्गदर्शक मंडल की बातों को मानो। थोड़ी भी शर्म होती। आज अगर ऊपर कहीं सचमुच पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बात सुनते होंगे तो शर्म के मारे उनकी आंखें डूब जाती होंगी। इस सदन को यह जानना चाहिए कि दिल्ली को राज्य बनाने के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टैंड क्या था। अभी तिरुचि शिवा साहब चले गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चर्चा कर रहे थे। इस सदन को जानना चाहिए कि दिल्ली को राज्य बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या स्टैंड था। संविधान सभा ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का एक निर्णय आया पट्टाभी सीतारमैया कमेटी का। नेहरू जी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने संविधान सभा की बैठक में जाकर कहा, अरे ये क्या बना के लाए हो, 2 साल में दुनिया बदल गई। दिल्ली की आधी से 3/4 संपत्ति भारत सरकार की होती है। हम दिल्ली को अलग राज्य का दर्जा कैसे दे सकते हैं? ये नेहरू जी की बात कह रहा हूं। अगर किसी सदस्य के अंदर हैसियत होगा तो मैं नाम लेकर कह रहा हूं, चुनौती देने के लिए वो खड़ा हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर की बात इन्होंने कहा। अंबेडकर ने कहा, so far as Delhi is concerned, it is better to us that as a capital of India, it can hardly be placed under the local administration। अर्थात जहां तक राजधानी का सवाल है, दिल्ली को स्थानीय प्रशासन के हाथ में कतई नहीं दिया जा सकता। यूएस कांग्रेस का पूरा नियंत्रण यूएस की राजधानी वाशिंगटन पर होता है। इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का पूरा नियंत्रण कैनबेरा के ऊपर होता है। इस बात का कोई आधार नहीं है कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी देश की राजधानी में कोई शहर हो, उसे सीधे सीधे देश की राजधानी के नियंत्रण में रखा जाए। और अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या? 1952 में सरकार बनी थी। चौधरी ब्रह्म प्रकाश पहली बार मंत्री बने थे और उसके बाद गुरमुख निहाल सिंह जी आए थे। कितने दिन वो रह पाए? नेहरू जी जानते थे जो हो गया है बहुत गलत हो गया है। उन्होंने स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई, फजल अली की। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया। बड़ी लंबी लंबी रिपोर्ट सिंधवी जी पढ़ रहे थे। एक छोटी सी रिपोर्ट मैं भी पढ़ देता हूँ। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की मीटिंग में इस कमेटी ने दिल्ली के बारे में कहा। In France, for example, there is a greater degree of central control over Paris than over other municipalities. In England, the police administration of the metropolitan area are directly under the control of Home Secretary, who does not exercise similar power in respect of other municipal area. Apart from the regions which are peculiar to each country or city, there are some general considerations necessitating special arrangement in respect of national capital. Capital cities possess or come to possess some degree of political and social predominance. They are seat of national government
That seat of national government, any constitutional division of the power, if it is applicable to the unit functioning in the seats of national government, it is bound to give rise to embarrassing situation. और 1956 की इस रिपोर्ट को आने के बाद हम आभारी होंगे इस देश के प्रधानमंत्री का, चाहे जो भी नाम हो। उन्होंने अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को हटा दिया, दिल्ली की विधानसभा को भंग कर दिया और दिल्ली को पुनः यूनियन टेरिटरी बना दिया। अध्यक्ष महोदय, चर्चा हो रही थी 1991 के विधेयक की। क्या है यह विधेयक? मेरे हाथ में वो कागज है। जिन बातों की चर्चा माननीय विजय साई रेड्डी जी ने की, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। धारा 3 सब क्लास 3 के ABC को मैं तीसरे पर आता हूं, जिसकी चर्चा सिंघवी साहब ने की थी, यहां नहीं। वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट में बाय लॉ मेक प्रोविजन फॉर गिविंग इफेक्ट टू और सप्लीमेंटिंग the provision contained in the foregoing clauses and for all matter incidental or consequential thereof. अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, वास्तव में ये जो विधेयक आया है वह दिल्ली के निवर्तमान विधेयक को सप्लीमेंट करने के लिए आया है। क्या प्राविधान है? 9 साल ये सरकार रहे, इन्हें मालूम था कि एंट्री 41 होती है, इन्हें मालूम था कि एंट्री 41 में लिखा हुआ है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इन्हें मालूम था कि इनके सरकार में आने से लेकर 9 सालों तक दिल्ली में कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी काम करते हैं। अगर ये प्रशासन चलाना सचमुच चाहते, साई रेड्डी साहब ने सही कहा, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, अगर ये सचमुच चलाना चाहते सभापति महोदय, तो इन्होंने 2014 में ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना लिया होता और अपने कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली होती। सच क्या है महोदय? यह कानून स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करता है, आर्टिकल 41 को जमीनी धरातल पर लागू करता है और लिखता है दिल्ली राजधानी राज्य क्षेत्र में समूह ख अराजपत्रित और समूह ग पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती अभिकरण दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड बनाया जाएगा। तो अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, वास्तव में यह विधेयक दिल्ली सरकार को इंपावर करने वाला विधेयक है। मैं अब अपनी बातें खत्म करूंगा। आपने विपक्ष के नेता को सुना है, बड़े दिन बाद बहस हो रही है और अच्छी बहस हो रही है। थोड़ा देर हमको भी जैसे उन्हें बोलने दिया, मुझको भी बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ये लोग कोर्ट के निर्णय की बात कर रहे हैं। क्या है कोर्ट का निर्णय? पढ़ा है किसी ने? कोर्ट के निर्णय के 2 हिस्से मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। एक हिस्सा कहता है, ये लिखित निर्णय है मेरे पास, ये पूरी किताब है कोर्ट के निर्णय की, मैं शब्दों को साहित्य के आधार पर बोल रहा हूं। कोर्ट का निर्णय कहता है, द पार्लियामेंट हैज legislative competence over all the matters in the list 2 and the list 3 in relation to the NCTD, including the entries which have been kept out of the legislative domain। बस मैं समाप्त कर रहा हूं। और अंतिम बात क्या कहा कोर्ट ने? ये लोग ले दही दे दही वाले। प्लीज कैसे? अंतिम लाइन सबसे, आप तो विधि विशेषज्ञ हैं, आपसे अधिक कौन जानता है हुजूर? उन्होंने कहा, We have answered the issue referred to the Constitution bench। हमको एक इशू रेफर किया गया है, हमने उसका जवाब दे दिया। By the order dated 6 मई 2022, 6 मई 2022 को हमें एक इशू रेफर किया गया था, हमने उसका जवाब दे दिया। The registry shall place the paper of this appeal before the regular bench for disposal। यानी डिस्पोजल करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय को आप जानते हैं सभापति महोदय, इसे रेगुलर बेंच में जाना था और वहां का निर्णय आना था। लेकिन यह रात में अधिकारियों के घर में घुसना, उनके यहाँ लाठी पोठी चलाना, अधिकारियों को मारना, सतर्कता विभाग के कागज निकालना, मैं खाली एक चीज जानना चाहता हूं, उन कागजों में था क्या जिसको ये निकाल के लाना चाहते? मैं धन्यवाद देता हूं इन लोगों को। अध्यक्ष महोदय, खुल चुकी है इनकी कलियत, जान चुके हैं दिल्ली के लोग। और आने दीजिए लोकसभा का चुनाव, ये 2 मिल गए हैं जो आपस में ना,
ये हमको समझाना चाहते हैं आत्मा की आवाज़। ये हम भाजपा के लोग हैं, सिद्धांत से जीते हैं, आपकी तरह अवसरवादी नहीं है कि कल एक दूसरे को गाली देते हैं। कितनी शर्मिंदगी होती है। नेहरू जी जब सुनते होंगे कि ये हमारे परनाती महोदय हमारी पार्टी को डुबा करके ही मानेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। डॉक्टर के केशव राव। नो सर, डॉक्टर के केशव राव। डॉक्टर के केशव राव। डॉक्टर के केशव राव, प्लीज। Thank you, sir. I stand disadvantaged. Coming in the serial of some 8 or 9, whatever I had to talk has already been taken over by Mr. Sanghvi and also Sukhendu. So I don't want to repeat what exactly the Supreme Court has said. What the Supreme Court judgment has said and how to analyze it, and to tell you that what you have done, we are not at crossroads, we are at crossroads. Please, you understand, I am taking this serious. I am taking it in new plank, sir, because I don't want to repeat whatever has been said by Sukhendu and also Mr. Singhvi. What they said is right. It is a fraud played on the Constitution, this ordinance, and it is absolutely with a mollified intention they have done. I understand your concern also, sir, because Sukhendu was talking that you had a sardonic smile on your face. It's only because I know this House has all the right to take any legislation it wants. That is your stand has been the day you took over as the Vice Chairman. But at the same time, its limitations also have to be understood. So that is why I will not take a stand on that. But I will only tell my friend here that we are not discussing the CBI or we are not talking about any criminal law here. We are talking about a constitutional law which is coming to replace the ordinance, which again is a statutory thing. When we oppose it, it is called statutory resolution. We don't oppose it because we are opposing in a debate. We oppose the bill here in the ordinance bill as statutory. I don't know why Congress was so much worried when our Sai Reddy was speaking. Everybody has these compulsions, and Sai Reddy's compulsions you will never understand. So please understand the compulsions of each one. As you said, everybody, the compulsions include many things. So I don't want to go into them. So politically you take a stand. But anyhow, sir, we have... I am always with Constitution, with this party or that party. I have resigned as a CW's member, I have resigned as Congress. Sir, Lok Sabha has discussed this in detail. And the debate yesterday was very informative and erudite. Because I am not trying to take what Mr. Singhvi or Sukhendu have said, I would like to take the entire debate at a different flag, which you will appreciate, sir. But before doing that, let me also quote what the Home Minister has said in the Lok Sabha yesterday. He was surprised how all of them came together when they were not together at all. He was worried about this grouping. Let me tell you, I am not part of India. I am not part of INDIA. But at the same time, when our nation is settled, when there is a set on the border, all of us join together to face the enemy. Like that, today I have an enemy in somebody who is trying to subvert Constitution. This subversion, I am against that. I stand against you because it is the Constitution that matters, not your politics. Unfortunately, the speeches that are being made, the debate that was involving itself into, was all about politics. One blaming the other. That is not the question. Today, right before you is something. And I would say, yesterday while the debate was very good in the Lok Sabha, a suggestion, not a suggestion, a remark came from the one party, a recognized known legal brain, Mr. Pinaki Mishra, who said he stood a very stout defense for you. He defended the ordinance, but at the same time he said, when it comes to the basic issue of the ordinance, when it comes to services,
And when the Supreme Court sees the fit, I don't think we should rush through it, and we should wait for another few days. This is what exactly a constitution should do. Sir, I'm trying to tell you what my view is. What Patra also agrees, that is, it is not keeping the equidistance. It is appreciating the constitutional point. Yes. What Pinaki was saying yesterday was, Pinaki Mishra was saying yesterday was, we are not sure of what is happening, and the Supreme Court is absolutely against the particular bill, and hence let us wait before I possible. Sir, anyhow, sir, as I said, we all join together. The entire opposition is one when something serious of this nature happens. Sir, yesterday the Home Minister in the Lok Sabha place, he was building a narrative. Not only he, his articulate minister, one of the ministers of state, was building a narrative against the Kejriwal. It was not against the AAP. They were taking the Kejriwal's names, Shahenshah, some Sheesh Mahal, or this or somebody, even here also. But if somebody is really corrupt, if you are building a narrative for corruption of a state, you have a right. You are Home Minister of that country. Instead of that, why are you meddling with the Constitution of India? You do that now. That is what we are waiting. That is what the members here said. Even if you are removing the state. Dr. Keshav. Even if you are removing the state. Dr. Keshav. Take it, sir. Through me. Yes, Dr. I will reflect everything the other side. Yeah, sir. I am a good reflector. So I don't know why Kejriwal should shake the BJP or the parliament so much. I never knew that he was that powerful man, that his corruption has made you pass constitutional amendment bills. Now, sir, one other point, because I am not getting into the integrities of the SC judgment, but one thing I tell you, what really surprises me, and it should have surprised you also, when a unanimous decision of 5 judges going along with the CJI sign a thing before the ink could dry, you have the pen of the president giving an ordinance. That too, it comes on the last day of the Supreme Court's working days. See, this really gives some kind of suspicion. And as a lawmakers, we get surprised over that kind of gestures. What we expect is, this is a house which discusses the law. If it is not good, we throw it out. If it is good, we opt it. Now, sir, as I have already said, it is a fraud, I will not say. Sir, why it is a fraud is, moreover, I will not again repeat, sir, more than 3 times the Supreme Court judgment said the representative character of a government is what is democracy is all about. And that cannot be replayed. Sir, now, this representative form of government is a triple chain of command which he said. Again, I will not go into that because much has been said about it now. Sir, I want to take the entire plank on a different plan. I want to take a debate on the different plank. Now the Home Minister is smiling because he thinks I have no point. I think I have more point than Singhvi has. But I don't want to waste the time of speaking. I have a problem. So, sir, I don't want to recollect or remind you of the Americans and the Supreme Court judgment. But when you read them together, in conjecture, you would understand what is exactly the constitutional morality is. I will not about it. So without constitutional morality, dharma can never be established. Constitution is our dharma. So without morality, that cannot be established. Sir, where are we leading to by giving all these kind of things? Before that, I also have to wait, my paper, sir. Sir, Mr. Smita, you said this is not about Delhi at all. What was referred to in the Supreme Court is about the cantors of NCTD and also about 239 AAA. What is cantors? It is about functioning. Cantors of 239 NA
is nothing but the functioning. On that, the Supreme Court very clearly said, the further ordinance hands over the government Delhi to bureaucrats, and the ordinance hands over the governance of Delhi to bureaucrats. This is what is happening. That takes me to my subject today, sir. Sir, I'm afraid we are opening a new era. It is a serious matter for the Home Minister to think, and also the minister, however they are voting. We are entering a new era of what is known as bureaucracy. I am not against bureaucrats. There is a subtle difference between a bureaucrat and a bureaucracy. Bureaucracy is when you make up this single-minded thinking into a theory and a policy, it becomes bureaucracy. When you shun your accountability, it becomes bureaucracy. Now we are, by handing over every power to a bureaucrat, like the chief minister, elected chief minister, elected government, then it becomes bureaucracy. I want Yadav to appreciate this point, because I am afraid of this, because this has been discussed time and again in many of the books. Like, sir, even Short Mill said, that man will be accepted if not anybody else. Mill referred to the bureaucracy as a distinct from government, separate from the representative democracy. So when you are thinking of representative government, which the verdict has stressed so many times, Karl Marx theorized about the role and function of bureaucracy in a critique of Hegel's philosophy. He said, you can depend on anything, but not on bureaucracy. Sir, I am afraid of one thing. Please understand. The students of history should understand. I am telling you, we have best of bureaucrats as people's representatives here. They are accountable to people. Those who are not accountable are called bureaucrats. In my reference here, those who are coming into this house, like we had one of the best bureaucrats, Manmohan Singh ji, who ruled this country. So I am not against bureaucrats, but this mindset that we should go to an agency which is not accountable to people and overrule who is accountable to people is what exactly is. Thank you, sir. Sir, I lost it. Sir, I am putting, but I will not take the names, but I have Mill and Wilson, and one answer to this problem is to say that bureaucracy has no place in all real democracy. Sir, time is over. So, yes, sir, you would appreciate, I would give a last sentence. Politics is an art of absurdities. You find them alarm. I am out of it. But you wrongly diagnose it and give a wrong remedy. That is what exactly is saying. Let us think. This is again goes to Marx, the great American writer. So with this I'll tell you, let us not in our temptation open the gates for a new agency to take over the representative character of this country, because we have come long way from monarchy to autocracy to aristocracy to democracy and republic, and now the new word used by Supreme Court is representative government. So this is what I am telling you. So my answer is this is, we are crossroads because we are trying to bury democracy, representative character. We are disregarding the representative character, and this bill has to be opposed by everybody who has some kind of a regard for democracy. Dr. Keshav, I am grateful. You have taken to paper glass. Because he sought my permission to have a glass of water. I said, don't have steel, don't have glass, have only paper glass. Thank you. Message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 7th August 2023 passed the Digital Personal Data Protection Bill 2023. I lay a copy of the said bill on the table. Professor Manoj Kumar Jha,
9 minutes. जी सर, वाकिफ हूँ। शुक्रिया सर, बिल्कुल शुक्रिया सभापति महोदय। एक छोटी कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय में एक शिक्षक थे, वो कह रहे थे कि एक सेठ थे राजस्थान में, अचानक सांप सांप चिल्लाने लगे। तो लोग आए, बोले क्या हुआ? बोला देखो सांप अभी पेट पर से चल के चला गया। बोले काटा तो नहीं ना? बोला नहीं काटा नहीं, रास्ता देख गया है। So when I rise Professor, this is my court. Everyone in the house knows. Not of your university. Sir, ये तो मैंने कहा है। Sir, I would want all of you to give me uninterrupted time. I'll not speak anything which is going to prick you or disturb your rhythm. What I wanted to say, sir, असल में कई वर्ष पूर्व भी देखा इस देश में, आज भी देख रहे हैं। जब बहुत बड़ी सत्ता आती है ना, तो कई ख्यालात आते हैं। कुछ अच्छे होते हैं और कुछ लगता है जिसको हम कहते हैं लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट। मैं और मेरी कलीग, सीनियर कलीग जया जी, हम लोग बात कर रहे थे, इतने पावर का करोगे क्या? कम है क्या? इतने राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, 303 का बहुमत है। उसके बावजूद अगर किसी निर्वाचित सरकार को लेकर के ये आपकी प्रणाली हो, कार्य प्रणाली हो, जहां की सुप्रीम को 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन हुआ, मेरे कई कलीग कह चुके हैं। संभवतः हमारी सरकार ने सोचा होगा कि वेकेशन में जाने से पूर्व उनको कुछ ऐसा पकड़ा दो कि अवकाश में भी वो सोचते रहे इसके बारे में। तो उन्होंने 19 मई को ये ऑर्डिनेंस लेकर के आए। तो अब जजों का काम था कि इस पर लगातार सोचते रहे। सर, इससे पहले कि मोटा मोटी कुछ बिंदु पे मैं आऊं, मेरे कुछ साथी वो जिन्होंने लोकसभा में वोट किया है, मोस्ट लाइकली दे विल डू द सेम हियर। हालांकि लोकसभा के बारे में मैं जिक्र नहीं करना चाहता था, माननीय सभापति महोदय, डाइवर्सिटी शब्द का आप बहुत जिक्र करते हैं, हम सब उसमें रिजॉइस करते हैं, हमारी प्राइड है वो। लेकिन एक मंत्री महोदया डाइवर्सिटी बोलते बोलते बोल गई कि इंडिया इज कॉम्प्लिकेटेड। सर, बचपन से लेके आज तक इंडिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा कभी। ये रिकॉर्ड में है पार्लियामेंट के, इसलिए मेरी चिंता है। इंडिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर, बड़ा सहज स्वभाव है इंडिया का, महासागर वाला है सर, सब कुछ समा जाता है, मजहब हो, धर्म हो, जाति हो, कौम हो, कोई हो। लेकिन इसको जब तालाब बनाने की आप कोशिश करते हैं तो महासागर तालाब नहीं बनना चाहता। सब फॉर ऑल दोज फ्रेंड्स, बड़ी अच्छी अच्छी बात कही, इक्वी डिस्टेंस। सर, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है न्यूट्रलिटी। जब चूहे की पूंछ पे हाथी का पांव पड़ा हो तो न्यूट्रलिटी उस चूहे से पूछिए कि उसको कैसा लग रहा है। तो मैं समझता हूं, इसलिए सर एक शेर अर्ज किया है, आज बड़े शेर पढ़े गए हैं, सुधांशु जी ने पढ़ा, तो मैं भी एक अर्ज करता हूं सर। ये पड़ोस के मुल्क से आया है। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ को भी इखलास मतलब ट्रू फ्रेंडशिप, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। दोस्त होता नहीं है हर कोई हाथ मिलाने वाला, आपकी पेश नजर है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था सर, एट अ हिस्टोरिकल जंक्चर एक चीज और मुझे बड़ी अच्छी लगी उस दिन, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को कोट किया। एक पल को मुझको लगा कि इस शांतिवन में अस्थियां कसमसा गई होंगी, ये हुआ क्या? ये हुआ क्या? फिर अंबेडकर साहब को भी कोट किया, राजा जी को कोट किया, उन्होंने कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी को कोट नहीं किया, एचवी कामत को कोट नहीं किया, जो शायद ज्यादा उनके पक्ष में तर्क आ जाता। सर, विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूं तो पीएचडी के स्टूडेंट्स को साइटेशन हम लोग सिखाते हैं, इसको कहते हैं एथिकल साइटेशन। एथिकल साइटेशन में ये नहीं होता है कि सेमी कोलोन के बाद का ले लिया और शुरू वाला छोड़ दिया। उदाहरण के लिए कहता हूं कि आज तक इस दुनिया में सबको लगता है इस देश में कि मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम है, रिलीजन इज द ओपियम फॉर मासेस। सॉरी सर, द एंटायर कोट इज religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless condition. It is the opium of people. सर, अब इसमें क्या किया हमने? सिर्फ ओपियम वाला लाइन निकाल लिया और मार्क्स को कह दिया कि धर्म विरोधी था। सर, मैं इसलिए कहता हूं साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहरहाल जवाहरलाल जी की अस्थियों को मजा आया होगा, जहां तक मुझको लगता है शांतिवन में। सर,
ये मूलतः, मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं बीजेपी के कार्यप्रणाली का विरोधी हूं सर, वो एक पॉलिटिकल रियलिटी है, हम भी एक पॉलिटिकल रियलिटी हैं। हम शत्रुता की जुबान से हमें एक दूसरे को संबोधन नहीं करना चाहिए, न सदन में न सदन के बाहर। साहब हम इंडियन मुजाहिदीन नहीं है साहब, हम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, हम वो भारतवर्ष हैं जिसको महासागर मैंने कहा, और उस महासागर में आप भी हैं, हम भी हैं। हम और आप एक दूसरे की कीमत पर नहीं है। तो सर मैं ये कहना चाहता था कि ये प्रतिगामी बिल है सर, आपको घंटी नहीं बजाना पड़ेगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, पक्का उसी में खत्म कर दूंगा। सर प्रतिगामी मैंने क्यों कहा, दुनिया देख रही है कि हम कितना प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन ला रहे हैं। सर ये मुझे जो चिंता इसमें ये हो रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, सर कुछ सोच के दिया होगा ना। आप अक्सर कहते हैं कि नेहरू नहीं चाहते थे, अरे नेहरू 56 में नहीं चाहते थे, 67 वर्ष बीत गए हैं, हकीकत नहीं बदलती क्या। नेहरू के टाइम में हम सार्वजनिक क्षेत्रों में कितना ध्यान देते थे और आज हम बेचने पे ध्यान दे रहे हैं। ये फर्क आया है ना सर, चूंकि ये फर्क आया है तो हर हकीकत में फर्क होता है। 56 की दिल्ली और आज की दिल्ली वही नहीं है सर। सर मैं तो अरविंद केजरीवाल जी का बिल ही नहीं मानता हूं, दिल्ली गवर्नमेंट का बिल ही नहीं मानता हूं। मैं तो ये मानता हूं कि सर अगर ये प्रयोग सफल हुआ, अगर सांप ने रास्ता देख लिया, तो कल को उन पर भी गाज गिरेगी जो आज न्यूट्रलिटी और इक्विडिस्टेंट के नाम पर न जाने क्या क्या सोच रहे हैं सर। हम तब भी आपके साथ होंगे, ये तो गारंटी है सर, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। परेशान हताश लोगों के पक्ष में खड़ा होना। हम तो कश्मीर चल रहा था, उस वक्त आम आदमी पार्टी ने कोई और पोजीशन लिया था, आज उनको समझ में आ रहा होगा कि क्यों उस वक्त वो पोजीशन लिया। और आज मैं ये कह रहा हूं कि कल को किसी राज्य के साथ होगा, हम आपके साथ होंगे। सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के मेरे कई कलीग कह चुके हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस ये 3 चीज कहूंगा सर। अगर ब्यूरोक्रेट्स मिनिस्टर को उत्तरदायी नहीं है सर, ये अराजकता को जन्म नहीं देगी क्या। मैं दिल्ली की जनता, अगर मैं दिल्ली सरकार हूं, मैं दिल्ली की जनता के लिए उत्तरदायी हूं। जैसे राघव कह रहे थे, अगर कोई विसंगति कहीं आती है, एलजी साहब के पास जाऊं सर, वो चुनाव जीते। हालांकि मैं जानता हूं कि इस देश में गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की भूमिका में विस्तार हो गया, अब तो वो राज्यों के नाम बदल दे रहे हैं। सर आपकी मुस्कुराहट इंगित कर रही है कुछ। मैं ये कहना चाह रहा था सर, और मैं समझता हूं कि ये बात मैं कह करके, और 239AA के बारे में जो बातें कही गई हैं मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, सिर्फ मैं एक चीज पे आऊंगा, कोरम। सर ये कमाल का कोरम हुआ, 3 में से 2 होंगे। मुख्यमंत्री बेचारा चेयरमैन है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, चेयरमैन विदाउट चेयर। मुख्यमंत्री चेयरमैन है, वो अगर 2 मिनट लेट भी पहुंचेंगे तो कोरम डिसाइड कर लेगा क्या करना है दिल्ली के लिए। सर इट इज नॉट कोरम, it is actually an instrument to decimate the very idea of elected government. सर घंटी नोट हो जाइए, केशव राव जी की श्रेणी में 1.5-2 मिनट और ले लूंगा। सर एक सोल डिस्क्रिशन का मामला आया है, सोल डिस्क्रिशन, और ये मैं आग्रह करूंगा माननीय गृह मंत्री जी से, हमारी महामहिम राष्ट्रपति के लिए भी जो संदर्भ आते हैं ना, to aid and advice of the cabinet or the ministry, सर उनका भी सोल डिस्क्रिशन नहीं होता है। ये तो एक तरह से मुझे सोललेस डिस्क्रिशन दिख रहा है, आत्मा विहीन डिस्क्रिशन। सर ये उसमें नहीं फिट बैठता है। सर एक और चीज, मैं अभी कल गूगल कर रहा था सर, फेडरलिज्म पर 2 बहुत महत्वपूर्ण कोट मिले इंटरेस्टिंग लोगों की, एक चंद्रबाबू नायडू जी का, एक नवीन पटनायक जी का। वो कोट मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, बस मैं बता देना चाहता हूँ। आखिरी सर, ये पेशे नजर तमाम लोगों के जो कहते हैं, अपील करते हैं कि साहब मदद करो इस बिल पे, तो दुष्यंत जी कह के गए थे कि उनकी अपील है कि हम उनकी मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। सर ये चाकू पसलियों से कह रही है हमारी मदद करो। सर ये आसान मामला नहीं है। जय हिंद सर, जय हिंद। करीम Vigash is speaking, sir. Vigash, I was given the name. Vigash Bhattacharya. He is speaking for CPIM.
CPI, for CPI, I am Bikash Bhattacharya speaking. I have given the name. विकास भट्टाचार्य. विकास जी. Chairman sir. 7 minutes. I will finish before that. Yes. The 7 minutes starts from here. Sir. They end here. We are all rational animal. Human is rational animal. The difference is rationality and animality. This rationality has driven us to move forward. The human civilization has advanced step by step. We have never seen that the civilization has gone backwards. When the Constituent Assembly was discussing about the Constitution, you are well aware, the role of governors were discussed. It was decided upon discussion that governor cannot be another source of power. Governor should act following the advice of the elected representatives and the representatives of the government. This is a settled principle. And on the basis we have advanced to a people's government where the governor was an ornamental constitutional head to keep liaison with the center. The basic principle was that the federal principle and federal governance as per our constitution is carried forward. When the constitution was adopted, then Delhi was not a state. That was a union territory. Like many others, I am not going to give examples. That rationality has driven us to go forward and advance to the stage that the Delhi would be a state with certain restrictions. And the people will have the right of governance through their representative. This was the advancement of the Constitution. That's why the Constitution Amendment and 239 AA was incorporated. Now what we see, we find today that we are going backwards. The governor or the bureaucrats, they are bound by the constitutional principle and constitutional morality to be answerable to the elected representative. That is the republic. That's the republic, democratic republic, the constitution makes us thought of. No question of this party and that party. That was the result of independent struggle. I know some people did not have the legacy of independent struggle. They might have a different outlook, different thought. But this representative government is the outcome of independent struggle which the people fought, giving their lives, sacrificing lives, not surrendering their own right at the behest of the British mercy. Now this, and what this rule is, what this bill for? Bill is sought to replace the ordinance. Why the ordinance came for? Let us analyze stage by stage. I am not going to have a quarrel with this party or that party. The House is for discussion of the constitutionality of this bill. Nobody questions the power of Parliament. Having power is one thing, but exercise of power is wisdom. Unless you have the wisdom, the power gives you absolutely autocratic authority, which is against the basic principle of our constitution. Sir, have you noticed you were the governor and you felt that in spite of the best of your desire, you have to be bounded by the aid and advice of the government. That was your practically frustration, that without the aid and advice of the government, I cannot do anything. Because the constitution thought of, again I repeat, the representation of the people. People is the last word. They have chosen, might be XYZ to your liking or not liking. In the Delhi bill, have you seen? I have never seen. The Constitution of India, the Supreme Court had said, even the President of India doesn't have unguided discretion. And here, by a law, Parliament will say, you have a sole discretion. Would the Parliament invite the autocracy? This Indian Parliament, this law invites autocracy. This law speaks of throw away the people's government. I appoint a bureaucrat, I appoint somebody of my choice, he will dictate. You will be subservient to this. Have you gone through this bill? This bill would take us to completely the stage of animality, not the stage of advanced humanity for which we feel proud of. We, the people of India, we thought of governance. I was reading this bill.
It reminded me the 1926 Act of Kolkata Corporation, where the executive was the superior, mayor was just a subservient force. That was thrown away by the people. Now here also we have, under the constitution, created third tier of government. Democracy means distribution of power. Democracy means not centralization of power. These bills only empowers a particular individual. He might be a wise man, but maximum power without any guidance would lead him to an autocrat, not less than the Hitlerite autocracy, which will take us to a doom. I have already submitted. Here, everybody has said, the chief minister is nothing but a puppet. Puppet of whom? The bureaucrats. Bureaucrats will dictate and chief ministers to follow. Is this the way you respect the constitutional principle and morality? Here the bill says, and in fact this bill is total amber written to the clauses, abdication of the governance by the people's representative. I would request all, don't be guided by your petty political feeling. This will lead to a situation. Tomorrow I will say the Orissa government, Orissa chief minister has to be subservient to the governor. I pass rule. What would you do? The home minister's praise in the meeting would not give you result. They will say there is a precedent. Parliament has passed such a law. Lord, you have already given me a caution. I said I will finish within the time. I finish with the appeal to everybody, even to the Treasury bench. Don't be trapped with such a bill which ultimately will kill you. Don't make the democracy absolutely a farce. Let the representative government survive and the principle be extolled by the constitutional principles. With this, I appeal to you, reject this bill. I appeal to you to all, reject this bill. Thank you. Very good. Shri Anil Prasad Hegde. Sir, point of order, sir. 7 minutes. 1 second. 235 and 230. I'd like to say there are a couple of references that have been made to Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji. He is not a member of the House, so any remarks thereof may be kindly examined and dispatched. One, sir. Sir, I'm not done. The second is a reference. The second, sir, I'm not yielding. I'm not yielding, sir. The second is with reference to the Odisha government, sir, as well. We are open to discussions on that. We can talk about 239 AA and why it only serves the Delhi government, because Delhi has a special place, is sui generis, which has been provided by Supreme Court. Therefore, to talk about any other government is not appropriate. The same may kindly be examined, sir. I will examine and take a call. Thank you. Shri Anil Prasad Hegde, 7 minutes. Thank you, Chairman. 7 minutes. 7 minutes. Thank you, Chairman. I am rising on behalf of my party. When there was a time for you to say so, Mr. Siva, you did not say so. And now you are saying so. I pleaded with everyone to say so. Mr. Hegde, 7 minutes. I'll take it. Thank you, Chairman. I am rising on behalf of my party to strongly oppose this bill. At the outset, I want to make it clear that this bill, which seeks to ratify an ordinance, has dealt a severe blow to democracy and cooperative federalism. Sir, the union government is usurping the powers of the state by blatantly bulldozing through laws on subjects in state list. The government is also bartering the sovereignty of this country, sir. यह विधेयक दिल्ली का मुख्यमंत्री और 2 अधिकारियों को मिलाकर नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का स्थापना करेगा, जिसमें सिर्फ 2 लोगों का कोरम से इस अथॉरिटी का मीटिंग संभव है। इसका मतलब दिल्ली का चुनी हुई सरकार को काम करने, निर्णय लेने के लिए दिल्ली के लोगों ने जो अधिकार दिया है, इस अधिकार को 2 अधिकारी लोग एलजी का सहमति से छीन लेंगे।
सर ये कैसे अनडेमोक्रेटिक है सर? पिछले सप्ताह इसी सत्र में बायोडायवर्सिटी एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट संशोधन बिल पास हुआ। ये बायोपायरेसी को बढ़ावा देगा। बायोडायवर्सिटी एक्ट में जेपीसी द्वारा किया गया 21 रिकमेंडेशंस में से 20 को दरकिनार करके पास किया गया है। सर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट is opening up precious forest resources to the exploitation of private companies. To illustrate my point on sovereignty, sir, पर्यावरण कानून उल्लंघन के लिए जो जुर्माना होता था, इसको समाप्त करने के लिए एक लंबे अरसे से अमेरिका को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मांगता बिल पर बोल रहा हूं, जिसके बारे में मेरे पास प्रमाण है। पिछले सप्ताह यहां पर बायोडायवर्सिटी संशोधन बिल पास करके उन लोगों को उनका मांग को पूरा किया गया। सर ये दिल्ली के बारे में ही बोल रहा हूँ। जब जैसे कैसे अनडेमोक्रेटिक है मैं बोल रहा हूँ। विडंबना है यह है सर, पिछले 3 महीनों से मणिपुर में लगातार सामुदायिक हिंसा चल रहा है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी संपूर्ण ब्रेकडाउन बता रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री को बदलने के बजाय दिल्ली में जहां पर सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में संशोधन लाना विडंबना है। ऑनरेबल मेंबर, बोलिए। मैंने बताया सर, ऑनरेबल मेंबर, स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। 1 second. You are a senior person, sir, knowledgeable person, sir. You have to confine to the issue at hand. I was talking how this is undemocratic. I was saying to drive home my point. How the bill is undemocratic. I was giving an example. Confine. मैंने बताया सर, ये बिल स्टेट लिस्ट में राज्य का अधिकार को छीना जा रहा है। सर, कृषि स्टेट लिस्ट में है सर। उदाहरण के लिए मेरे दल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली की सरकार, दिल्ली के आम आदमी का सरकार जीएम मस्टर्ड और जीएम क्रॉप्स का विरोध किया है, जैव परिवर्तित फसल को। लेकिन पहली बार खाद्य क्षेत्र में जीएम फूड क्रॉप्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी का DMH11 जीएम मस्टर्ड को 25 अक्टूबर 23 को केंद्र सरकार अप्रूवल दिया है। विदेशी कंपनियों को खाद्य क्षेत्र में जैव परिवर्तित फसलों को लाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ट्रोजन हॉर्स बन के रास्ता साफ किया है सर। Go ahead. बोलिए। सर, So 1 minute, सर, मैं जो आपको अभी सॉवरेनिटी के बारे में मैंने बताया, उसका एक मैंने आपको पढ़ के बताता हूँ एक लाइन। सर, ये यूएस का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का जो वहाँ का बराबर है, जो मिनिस्ट्री का बराबर है, ये बताता है कि this dialogue should be preceded by an analysis to be developed by EPA of India's current and relevant statutory provisions with a discussion of these interpretations and application in civil cases as well as specific recommended changes in the constitution. देश का संविधान में को बदलने के लिए अमेरिका हमको कह रहे हैं सर, और environmental statutes, regulation that are necessary to establish civil judicial authorities. सर, मैं इस बिल को मेरे पार्टी विरोध करता है सर। श्री जोश के मनी 4 minutes. 4 minutes. Thank you, sir. I raise to oppose strongly
the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. As said by my colleagues, it is anti-democratic, anti-federal, and it is aimed to distract the proper functioning of the democratically elected government of Delhi. When you talk about democracy, it is centered around the other people. It is made for the people. But this bill is formulated by the bureaucrats, of the bureaucrats, and for the union government, which means the people are eliminated and the essence of democracy is vanished. Yes. The bill is nothing sort of a disgraceful attempt to snatch the power from the hands of the people. The way the ordinance was sneaked in without any valid justification is nothing short of the abuse of power. Very bad. What is the objective of this bill? What is the emergency of passing creating the ordinance? It is only a politically motive gain. The bill undermining the very essence of parliamentary democracy and the right of its citizen. It undermines the state's right and authority, turning Delhi into a mere puppet under the central government control. Yes, sir. The provision of the Honorable LG's sole discretion on matters recommended by the National Capital Civil Service Authority is a cruel joke on the concept of autonomy and self-governance. The bill is another betrayal of our democracy and federal system. So the bill is a systematic death blow to the democracy, is what achieved by this legislation. The central government, with the majority which they gained by decisive strategy, is now chopping the branch they sit. So we can cite a number of cases like to establish this newly the various bill which is passed in the parliament, the multi-cooperative society bill, the agriculture bill, and also the intruding upon the sovereign of domain of the state and so on. All these are trying to crush the federal system of our country. Exactly. The bill also adds to the list of actions undermining the federalism in the country. Basically, we understand that BJP is not able to get the power of the state of Delhi from the people of Delhi democratically, that is through election. Hence, they are trying to curb the powers of the state government. The only question is, if BJP was in power in Delhi, would they accept this bill? I am sure that they will never ever think of it. Excellent. Let me conclude by saying this bill and the ordinance is an insult to the spirit of the nation. This legislation I will vehemently oppose until justice prevails. Thank you. Shri Abdul Wahab, 4 minutes. Shri Abdul Wahab, not present. Shri P. Chidambaram, Shri P. Chidambaram, not present. Shri Mahesh Jethmalani, Honorable Chairman, I rise to support this very, very important bill. I'm not in court and I'm surrounded by you. Can I persuade you to yield in favor of Mr. Chidambaram? Ah, yes, of course. I was actually supposed to speak after it. No. Call has been taken by the chair. Shri P. Chidambaram. I'm just looking for the time. 9 minutes. There is a request from your party. 15 minutes. All right. 15 minutes. Sir, my good friend Dr. Abhishek Singhvi has marshaled
the legal arguments and place the facts before this House and appeal to them, appeal to the House and appeal to the Treasury benches not to proceed with this bill because this bill is unconstitutional. Now, I can understand the full-throated support given by the BJP, but what I do not understand is the half-hearted support extended by two of my learned friends representing the BJD and the YRCP. They know that this is unconstitutional. I think the law ministry knows it is unconstitutional. It's like a moth which burnt once when it approaches a fire, again approaches the same fire, and again approaches the same fire because it's a moth. Now, this government tried it once, it failed. It tried it a second time, it failed. And you're trying it a third time. I wish you what you will get, a spectacular failure when this bill is taken up. Be that as it may. I'm not getting into the legal arguments because we are not a court of law, nor, I'm sure, anyone in the chair wants to be a judge. We are the Council of States. We are duty bound to protect the rights of states, rights of union territory. We are not representing an individual parliamentary constituency. I'm representing a state. Each one of my learned friends is representing a state. And collectively, we should represent all the states of India. What are we? Are we a union of states? Or are we going to become a union of moth-eaten states? Or a union of moth-eaten union territories? Or a union of municipalities? Please remember the old dictum, no taxation without representation. That's the fundamental premise of a representative and parliamentary democracy. Delhi has, according to the figures I sourced today, 3.17 crore people. Now, the 3.17 crore elect a government. They elect a government to govern them, to take decisions on their behalf. The underlying premise is we are a representative and parliamentary democracy. You may ask me, where are those words in the Constitution? Those words are in the Constitution. The magic words are that there shall be a council of ministers with the chief minister at its head to aid and advise the lieutenant governor. The words aid and advise is not some kind of a friendly advice. Aid and advise has a long constitutional history. Aid and advise means the real power is in the Council of Ministers. The LG exercises formal power. The real power is with the ministers of the government. The formal power is with the President of India. Aid and advise is magical words. What we are doing today is subverting the three magical words, aid and advice. Now, people are watching us. It's not only the 200 odd members in this house. People of Delhi are watching us. They will watch us today on television, on YouTube. They will know that
This government is attempting to take away the real power of the elected representatives and put it in the hands of bureaucrats. Now, I asked in a tweet, and I'll ask this question. What is the merit you file with the bill? Leave alone the constitutional aspects. What is the merit you file? Is there merit in a 3-member authority where 2 officers will constitute a majority and overrule the chief minister? Is there merit when 2 members of the 3 constitute a quorum, they can even call a meeting, hold a meeting without the chief minister? Is there merit that even if a decision is taken unanimously, the LG can overrule it? Is there merit that the member secretary, who is the principal secretary of Home, will convene a meeting with or without the chief minister? What is the merit? What is the merit? I heard you on television. I heard the honorable member on television. I didn't find you mention any merit in any clause of this bill. You heard me. I heard you also. And I was even more disappointed. Therefore, what is the merit? What is the merit? What is the merit? What is the merit and what is the merit in this clause? They are sitting in the opposition. What is the merit in any clause? There is which clause has any merit in it? I would urge the honorable member to get into a groove that we are not does not getting into the invite. constitutionality. I am saying, irrespective of the constitutionality, which clause has any you went merit? on a tangent, physically and thoughtfully. Therefore, the honorable member had an occasion to be on his feet. I would urge you to confine to that list. Very well, this is my view. It is expected of you, sir. No, I have great respect for their view. All I'm saying is, I didn't find them point out the merit in the clause of the bill irrespective of the constitution. So we have a bill today which the government thinks is a model for Delhi. They had invented a model for Jammu and Kashmir, and that is in court today. Please remember, we always talk about breakdown of the Constitution of India, breakdown of constitutional governance. Article 355, 356 speaks about breakdown of the constitutional machinery. What are we doing today? We are breaking the constitutional machinery. What did you do as a finance by passing this bill. By passing this bill. What did you do as a finance minister? By passing this bill, we are breaking the constitutional machinery as envisaged. We broke it on 5th of August 2019 in Kashmir, divided a state into 2 union territories, and sending a chill in the spines of every state that any state can be broken into union territories. What are we doing today? We are breaking the constitutional machinery. Sir, honorable member, let me end by saying, while I endorse whatever my good friend Dr. Singhvi said about the constitutionality, and there is another forum which will argue, please remember, you have no constitutional authority to pass this bill, be that as it may. You have not even a moral authority to pass this bill. The treasury benches, when did they last win an election in Delhi? 15 years, Mrs. Sheila Dikshit was chief minister. I think there were 2 or 3 lieutenant governors. Please, 1 minute. 2 or 3 lieutenant governors, and I was home minister for a while. Never once did the present present arrangement come in the way of Mrs. Sheila Dikshit functioning as perhaps one of the best chief ministers of this country. Just one minute. I asked you before I started, you said 10 minutes, therefore I'm speaking. It's not 10 minutes yet. It's 9 minutes. It's 9 minutes. It's 9 minutes. It's not You 10 said minutes if I...
Sir, my problem is that everyone needs support of Jairam. When did the BJP last win an election? They won an election before 1998. 1998 to 15 years, Congress government was there, and after 2013, it's the AAP government. You won an election 25 years ago. What moral rights have you to speak for the people of Delhi and say this is what the people of Delhi want? This is not what the people of Delhi want. This bill must be rejected. Honorable Chairman, I rise to support this bill. Sir says it's getting louder. Decibel level has to be, is getting louder, sir. Yes, Mahesh Jethmalani. Sir, Dr. Singhvi, in his opening remarks, said that he made a lot of uncharitable comments, that this was a bill, hunkar ka natija, his exact words. He also said that we were Alice in Wonderland, constitutional arrogance. All these words were used, but I found very little in his speech regarding the legality or the constitutionality of this bill. I'm reminded about your Lordship, my Honourable Chairman. Very difficult to wear two hats on the same day. Honourable Chairman will recall, with all his eminence at the bar, this is an old saying. You are the third senior advocate. Yes. I am listening for the day. And trust me, I will go home and read every word of each of you have said and privately get back to you. It will be a deja vu moment for you. Anyways, we used to have an old saying in court that when a lawyer is strong on the law, he hammers the law. When he's strong on facts, he hammers the facts. When he's strong on neither, he hammers his opponents. A lot of that has happened today. So I come to as Mr. Chidambaram has said that he'll not deal with the law in this matter. I don't blame him. For some time now, he's forgotten about law and compliance. So I don't blame him. Now, sir, let's come to the constitutionality of this bill. So the constitutionality of this bill is to be found in the Constitution itself, and that is 239AA. And I'll just read one provision. It may be a little pedantic for most people, but I'll just read. After all, sir, the Union Territory of Delhi is sui generis. The Supreme Court has said so in the 2023 May judgment. But when it said it was sui generis, which means unique, it meant that it was a sui generis union territory because it was the only union territory which had the privilege of having both a state legislature and a council of ministers. It is not a full-fledged state. That may be unfortunate. It is a sui generis, i.e. an escalated union territory with more powers than other union territories. Now, the provisions of the Constitution reflect that. If I may just read one article or one sub-article, 3B. Nothing in subclause A, which is the powers of the Union Territory of Delhi to legislate. It says, nothing in subclause A shall derogate, which means depart from, the powers of Parliament under this Constitution to make laws with respect to any matter for a Union Territory or any part thereof. Now look, this is wide. Sir, this is wide. This is widespread. This is all-encompassing. It covers union list, state list, concurrent list. The union government can make powers, notwithstanding that there's a vacuum, on any matter in any of the three lists. So the ultimate power of the Union Territory of Delhi still vests, notwithstanding the fact that it's a sui generis union territory, ultimate power vests in the union. That's point number one. Now,
so what does the bill do? This really is a battle about control of services. It never arose in the past when Sheila Dikshit was the Chief Minister of Delhi, a reign which Mr. Chidambaram proudly flaunts. There was no question that she never thought that it was necessary to give Delhi full statehood in all the 10 years that she was in power. She never gave Delhi full statehood. Apart from that, she never thought it was necessary to have a provision like this, because since times immemorial, and particularly since 1991, when Delhi got that sui generis status through 239, ever since it got that, it was almost accepted. It became a matter of convention that the powers of control over the services would vest in the union. And it did in fact happen. That was because the seat of government is New Delhi, of the union government. Parliament is here. Foreign diplomats are here. Embassies are here. So the seat of power being in Delhi, control over services in Delhi vested in the union government, and it passed muster over successive administrations. It was never questioned. Now, what does this bill do? This bill actually reflects the sui generis union territory status of Delhi. And I'll just read one provision. 45E is crucial. In the matter of transfer of postings and transfer of the services, 45E creates a new body. It creates a body, an authority known as the National Capital Civil Service Authority, to exercise powers conferred on and discharge the functions assigned to it under this part. Now, that body, the constitution of that body, reflects the sui generis nature of the Union Territory of Delhi, as also the fact that the ultimate control rests in the Union government. So, the authority referred to in subsection 1 shall consist of the following members, namely the Chief Minister of the Government of National Capital of Delhi, who shall be the chairperson of the authority ex officio, and the other two members will be, so the Chief Minister of the Government of the National Capital Territory of Delhi is the ex officio chairman of the authority that will deal with postings and transfer. The Chief Secretary of the Government of National Capital Territory of Delhi member will be ex officio, and the Principal Home Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi, will be the member secretary to the authority. So, the three-member authority will consist of the Chief Minister and two high-ranking bureaucrats from the center. This authority fully reflects the nature of the relationship between the Union Territory of Delhi and the Union government. This is reflective of that. Now, sir, what is the reason for this departure, if I may say so? This has been going on, as I said, since 1991. Control postings of services is within the jurisdiction of the Union government. I see none whatsoever. The only change of circumstances that seems to have taken place, if I may use an analogy from cricket, with the respective parties who are chiefly concerned with this change, AAP, Congress, and the BJP, is that the Congress, who never had any problem with this issue about control of services, has now, like a batsman who has lost form and hasn't scored a half century for 10 years, is now seeking an alliance so that it can inch towards its first 50. The AAP is like a cricket team whose captain has been caught ball tampering. A vigilance report exists, and suddenly they want to become vigilant about the vigilance report.
the BJP's present government is the third umpire. We want to stop this nefarious practice. A convention, a wholesome convention for better administration and for effective administration of the Union Territory of Delhi by the Union government now needs to be made into law, lest people subvert the services and hide the corruption. I wholeheartedly and with all the vigor at my command support this. Thank you, Chairman. Shri Abdul Wahab, 4 minutes. 4 minutes. Yeah, for me is more for me. Respected Chairman Saab and my colleagues are telling more about this Delhi bill. I don't have much to add to that one. My only wish is, this is only for 8 months business. Next government is of India. So everything what is happening here is negative. And Amit Shah ji thinking that he will be always the Home Minister only. He don't want to be Prime Minister also. So the next Prime Minister already announced, third term I am the Prime Minister. Modi ji was already told. So what is the need of this bill, thinking that I will be always Home Minister? So my request is to take this bill, and anyway it is going to be negated by the next government of us. This for sure. Yes. So India will be ruling, all this will be null and void. So my request to Amit Shah ji, at this point of time, don't be in the history, don't be a villain instead of a hero. So what happened in Kashmir? This word is not good. Wedding is no. Using a word villain. Sorry, I am myself taking you back. See, all of us. Withdrawing. One second. All of us have to exemplify our conduct. Yes. So that it could be emulated by others. Yes. It is good of you. I took back. It is good of you to take snapshots, but in the process, maintain decorum. I didn't mean and that. dignity. Go ahead. It is expunged. Yes. Go ahead. So, my request to Amit Shah ji, it is happened in Kashmir and in here and maybe in Punjab tomorrow, I don't know. So whatever is happening in our immediate solution should be in Manipur and Haryana and other places. So I request Amit Shah ji to interfere in Manipur more than in Delhi affairs, small affairs. Some officers changing this and all. But this gentleman, our Chief Minister, came as a, I am telling, as a hero. I was thinking that they are the B team of BJP before I was thinking. But now only I came to know they are not the B team of BJP. They are also want to rule Delhi as a Chief Minister. So I stop this one asking again to Amit Shah ji to repeal this bill. Thank you. Shri Ranjan Gagoi. Honorable members, it is the maiden speech of the honorable member. I thank the Chairman, sir, for the opportunity. It's a great day. A maiden speech on a subject that is very dear to my heart, and a subject that can be as related to law. Also has the protection of the House. It is freedom of speech in an absolute form. The member has a right to say on the first day whatever he wants. So, I would confine myself to the legality of the proposed legislation. And I will address the House and the Chair, of course, from three standpoints: sub judice, overreaching the Supreme Court's order, and the constitutional validity.
So there is some faint voice about impropriety, sub judice. As a layman, it is not sub judice. What is pending before the Supreme Court is the validity of the ordinance. What the House is debating is on the validity of a law. Please. Would you please take your seat? No. Absolutely no. No. Don't force me. The House was going well. This is the replacement of that ordinance. All right. Do you want me to go further? Please take your seat. Mr. Chairman, I sir. will not allow. This is not good. Mr. No one Chairman, was sir. interrupted. You suddenly rise. The House is getting enlightened. Trust me. Mark every word. The House is getting enlightened. As was enlightened by others also. Please go ahead, sir. Mr. Chairman, sir. What is pending before the Supreme Court is the validity of the ordinance and specifically two questions referred to the Constitution bench. That has nothing to do with what is being debated in the House, number one. Number two, this is for all the members of the House and it has some importance so far as the relation between the judiciary and the executive is concerned. I would request all the members of the House to have a relook at Articles 105, 121 and 122. There is absolute freedom of speech in Parliament, and whatever a member says in Parliament cannot be questioned in a court of law. I do not find a similar constitutional provision restricting the debates in courts. What the courts cannot do under 121 is question the conduct of a judge in relation to a pending matter. The restriction that the House imposes on its own speech is self-imposed by the rules. And what do the rules provide? Mr. Chairman, sir, the rule says a member shall not discuss a matter of fact, which is a court pending before a court of law. It's not a matter of fact that is what is being debated. It's a question of law. It is not even an interpretation of law. It's on a debate on law. Now, Mr. Chairman, sir, so far as sub judice is concerned, the bill takes away 3A from the ordinance. To my mind, it's a perception, I may be wrong. To my mind, when 3A has been taken out of the ordinance and it is not there in the bill, the questions referred to the Constitution bench stands self-answered. Because if you read the order of the Supreme Court referring the matter to the Constitution bench, a copy of which I have got and I have read, my view is that the entire reference has been necessitated by the provision of 3A of the ordinance, which no longer exists. Therefore, it is the prerogative, the right of the members of the House to debate. The question of sub judice doesn't come. So far as overreaching or outreaching the order of the court, Supreme Court is concerned, very shortly put, the position in my perception is this. The state legislature makes laws for the states, the parliament makes laws for the union territories. For the National Capital Region of Delhi, which has a special status, the
the state legislature or the legislature of Delhi makes the laws on the state subjects, except 3. But as Mr. Jethmalani read out, by virtue of 239 3B, Parliament has a power to frame laws beyond these 3. And that is exactly what the bill is seeking to do. Therefore, there is no question of overreaching. And what has the Supreme Court repeatedly said? Paragraph 164, 2 conclusions. These are the 2 conclusions. May I read out these 2 conclusions? The legislative 164C. The Legislative Assembly of the NCTD has competence over entries in List 2 and List 3, except for the expressly excluded entries. In addition to entries in List 1, in addition to entries in the Union List, Parliament has legislative competence over all matters in List 2 and List 3 in relation to NCTD. This is the conclusion in paragraph 164. C. Paragraph 164F. The executive power of the NCD with respect to entries in List 2 and List 3 shall be subject to the executive power expressly conferred upon the Union by the Constitution or by a law enacted by Parliament. So this is the conclusion of the Supreme Court. Sir, no bail, sir. And therefore, now, what has the Supreme Court repeatedly held in the 2018 judgment and the 2023 judgment? Precisely this. And I'm very grateful for the fairness shown by the first speaker, Dr. Singhvi. If I'm not mistaken, what Dr. Singhvi said, the power of Parliament is not in dispute. He said it very fairly. The power of the legislative competence of Parliament is not in dispute. Then why would this law be bad? This law would be bad if it violates the fundamental rights, number 1. Number 2, if it violates any other provision of the Constitution, and if it violates the basic structure of the Constitution. Right. Honorable members, yes. I don't have to remind honorable members, it's a maiden speech. Yes, please. And the honorable member is making his point very rationally. Sir, it is one point of view. I will take. Well, the chair has taken a call. I will take 2 minutes. And here with it. Sorry. You have 15 minutes. You have 15 minutes. Should we? So far as one second. Fundamental right is concerned. Honorable member, one second. Yes. This House should not set an example that an honorable member with huge experience in his matter is making a point. And every time you rise and tell me time is over. It is my authority on a maiden speech. Sorry. Honorable members, I have given adequate time to every member on the maiden speech. Yes. And I had every time pleaded with you to show respect. Merely because what the point is being made, it is required not to be registered, but to be digested. And you will have an opportunity to deal with it. We are getting input in this House from a very experienced legal mind. We got it from Dr. Singhvi. We got it from Mr. Chidambaram. We got it from Mr. Jethmalani. We have to get also from Mr. Gagoi. Please, sir.
In any case, Honorable Chairman, sir, I have come to the end of it. Violation of fundamental rights. The only fundamental right that can be violated is perhaps Article 14, and that too, the limited part of Article 14, that the law is arbitrary. Is this law arbitrary? This doesn't appear to be so. The law may not be to my liking. That does not make it arbitrary. Absolutely. Next, does it violate the basic feature of the Constitution? Sir, I have to say something about the basic feature. Please. There's a book by Mr. Andarjuna. Yes, yes. The former Solicitor General on the Keshavananda Bharti case. Yes. Having read the book, my view is that the doctrine of basic structure of the Constitution has a very debatable jurisprudential basis. I would not say anything more than this. I wouldn't say anything more. The doctrine of basic structure has a very debatable jurisprudential basis. In any case, Honorable Chairman, sir, what the bill provides is diluted form of what federalism, because it's a union territory, not a full-fledged state. Therefore, what you have is a diluted form, asymmetrical form of federalism. And the third thing is, does it violate any other part of the Constitution? The Supreme Court mentioned about triple autonomy. What you have under the bill is a modified form of triple autonomy. The bureaucrat is responsible to a lieutenant governor, who is responsible to the Home Ministry, who is responsible to the House. You have a modified form. If you want a full-fledged federalism, which today is a basic feature, though I have my own perceptions there, you can go for an amendment, for a constitutional amendment, and make Delhi a full-fledged state. Now, the most important thing, Chairman Sir, is Article 239AA, starting from 1 to 7, is not under challenge before the Supreme Court. Challenge it! That is not under challenge. Therefore,